he is known across the country for his major contribution to engineering education. And you will be amazed to know that how could he lead some of the very prominent engineering institutions both in government, public sector and private sector. So Professor Sandeep Sancheti is considered an institution builder, policy planner. He has been writing articles. He is PhD from Queen's University of Belfast, UK, MSc from DTU Delhi, and BTech from NIT Warangal. And current position he is occupying. He is the Vice President Research Relations and Academic Ambassador Algeria, India. So Algeria Management Faculty will be knowing it is one of the biggest research journal publishing company located at Netherlands. He has held high positions in FICCI, CII, EPSI, IUCEE, NAC, Department of Science and Technology, CSIR, DRDO, TACIP, Association of Indian University, where he has been the president, all India president of AIU, which is a rotating post for the senior most vice chancellor in our country. So he started his career from NITs, government-owned technical engineering institutions, and he is famous for it. He has made transformation in one of the top NIT, which is called NIT Surathkal. Surathkal is part of Karnataka. Okay, so when I heard him and he told me the story, he was talking about how did he transport NIT Surathkal, which was not very well known, but now it is considered among the top NIT in our country. He has been director at NIT Trichy, NIT Calicut, he has headed NIT Delhi, and he was simultaneously also heading the School of Planning and Architecture Delhi. These are all institutions of national importance. National importance means these are established by central government and they work for the country, not a particular region. Besides these positions in public-owned institutions and center of excellence, he has been to private sector also, because our group belongs to the private sector higher education provider. Our leaders are working in a private sector, self-finance sector, and we need a person like them who has experience both in public sector and public-owned institutions as well as private sector institutions. So he has been the head of Manipal University, Jaipur, as its president. He has been vice chancellor of SRM, Institute of Science and Technology, Chennai, and he has also been the provost of Marwadi University, Rajkot, and he has been visiting faculty at Asian Institute of Technology, IIT Bangkok, and so he is the person who has more than 45 years experience in Indian higher education. So we requested him a few months back in the month of probably January, and he was very liberal for accepting our invitation, but because of some events happening in our campus, and he was also very busy many of the times, so this was postponed. But now, today that day has come, and we will listen him first, and for first half means for next 60 minutes, he will use his time. He has a presentation and he will speak of the topic. And topic, as you know, you can read here, how should the academic leaders prepare themselves for future challenges in Indian higher education for next 5 years. So we have taken, because we senior people have a habit of talking about our past, but I requested him that he should speak more about the future. And based on his, of course, that experience is valuable for our younger colleagues. They have to lead and they have to work for the next 20, 25, 30 years. So whatever he has gained 45 years is very valuable, because he has worked both highest level, he has worked both public owned and private institutions.
So over to Dr. Sanjay Ji. Give a big applause. Very good morning to all of you, and thank you so much, Professor Chaturvedi for kind invitation and also very generous introduction. I'm really honored to be here today, especially with this August gathering and all the senior staff, faculty members of the IILM, etc. And probably, as you said, some of them might be joining online. So I'm very happy and excited about it. My association possibly with Professor Chaturvedi started somewhere in 2017-18. During that time I was Vice President of AIU. So we will also move around helping the governmental bodies decide policies on UGC and parliamentary committees and other things. And where Professor Chaturvedi will be leading EPSI. And that's where my innings also started with EPSI. Since then it has continued very strongly. I'm happy that some of us are regularly helping such organizations to decide on various things of importance. And I'll probably give you an odd example that how we have contributed to that. But my association with IILM also probably is 10 years old. When I was in Jaipur, I was probably addressing 10 years back the Jaipur faculty. For some reason there was one Professor Ashok Bafna who was there here and who had invited me, and then once there was an opportunity on some webinar. I don't remember exactly precisely where it was, but my system says told me that I have addressed one webinar also of IILM some time back. So, but once again I am happy, and Professor Chaturvedi Sahab had already set the tone that you cannot be dwelling in your past. However, past becomes the foundation of whatever you are, so maybe there might be some traces. But I'll take you through some of the things which I believe can be important, and to lay the foundation of where you are, I'm taking you. Probably I'll have to share some thoughts here and there. So that's how it will be, preparing academic leaders for the future challenges. Can I do it from here? Okay. If the laptop can be with me, yes, that will be nice. I can see it, otherwise I'll not be facing you. The teacher will never like that we don't face the audience whom we are talking to. Okay, I can move it from here, so that's not an issue. So this is how it is that I'm going to cover some of the aspects. My background is known to you. I come from the engineering side, electronics to be more precise. But having been a Vice Chancellor for 17 long years, I have forgotten all my engineering and electronics. I have become a specialist in building construction and maybe legal matters and HR matters and financing and administration and policy making. Anyway, policy making I started doing almost from the year 2000. That was my cup of tea, you can say, where I excelled or I like, I can say. So the whole thing is about introduction, a little bit about, sir had mentioned about VBSA. Not that VBSA is so well defined right now, but I'll still make a comment. And that's a borrowed comment for VBSA, that's not my own strength. But rest of the things which I'm going to share, some of the challenges, opportunities, flexible education, which is a requirement today. Research and innovation is what I'm promoting today. I'm the Vice President for Elsevier. You probably know Elsevier, some of you, is a very old company. A little bit, one slide of introduction is there for that. And then technology, because I'm a technologist, I'm a strong advocate of use of technology. I'll talk about that. And no one can remain untouched from what you call the artificial intelligence. I'm not going to draw conclusions for you. I've not written anything here. You will draw your own conclusions. If you like something, take it. If you don't like, leave it. But if you still hate it, you can ask me why you hate it or whatever is my opinion on that subject. I'm open to that. So that's how we'll go about. But in the last one or two slides, I'll talk about what faculty needs to do or change, which I have not listed here. So initially, just a small Elsevier thing, because I represent them and they permit me to do such things, so I think I owe a responsibility. It's very well known by Scopus. Most of your publications which are generally looking at Scopus, in the Scopus
campus database. So world's biggest database is there. Around 140 years old company, 180 countries where they are present. And there are many tools and services and databases which they have. The importance of that has gone up because of AI, because we are becoming more data driven. I am currently their vice president. I am a fellow of the organization, to say so, who works for bright ideas, new talents, new functions, new tools, new services. But I don't do anything administratively for them. And that's the reason why I'm located in Jaipur and no one reports to me. I don't bother others with anything else other than doing some good positive thought processes. And we have something like 17 to 18% of world's top publications in scientific and medical and technological domain coming through Elsevier, and around 28-29% citations are from Elsevier side, where around 7,000 publishers are existing. We are one of them. And we publish around 3,000 journals typically, whereas others also who are equally big or competitive, Springer Nature, Clover, Taylor and Francis, they also do a similar kind of a thing. What else they do, I don't know, but their numbers of journals are around the same. So you can imagine these 4 people, 4 agencies doing around 12,000 journals, and then there are 7,000 publishers. So the world of publishing is becoming very heavy, and we all crave to do that, by the way. We all want to disseminate knowledge, new things and all that. So that's the introduction which I have. So NEP, I'm sure you have heard many a times, but maybe some of you might not have read. This black thing is the reason why NEP came into being. Alright, black thing, fragmented higher education, limited autonomy, less emphasis on research and so on and so forth, large affiliating universities, and they have been addressed in NEP on the right hand side where you see red and green marks which are there. Alright, so some of these have been addressed, that how the fragmentation has been removed, or how affiliation model is going to change. For example, 10K. So I'm not going to devote time on that, just to set the tone that these are the requirements, and some of the requirements will be met only by technology. Some can be met by AI, which I am going to talk about. Some can be met by new approaches of teaching learning, which anyway I am going to touch. So something like that will happen. Alright. And if I make some general comments on this, I would say that the line on the top you are seeing, these are the 5 principles on which the NEP has been built, and they claim. And by the way, the previous one must also be like that they could not have negated or escaped from access, equity, equality, accountability, transparency, typical government norm. But what I found almost on the day one is that the one which I mentioned in the line number 2, that they don't talk at all about speed and efficiency. In the current context of the world, if you are not doing things with speed, and if you are not doing efficiently, you are gone. And that is the reason why the government institutions, even if some of the best ones are finding it tough against the private ones, someone like us, because we have much better efficiency, much better speed. Privately, I can give you those examples if you so like. Very clear, crystal clear example, measurable example, real life examples, why I am saying that. In addition, I used to keep one more element called diversity. I have removed because even IITs have started becoming diverse, but still IITs are purely engineering, NLUs are purely law, AIMS are purely medical, they don't digress into new fields. Whereas most of us, for example, I have led Manipal, we do almost everything. Same with SRM, almost everything in terms of disciplines, medical, dental, whatever, paramedical, architecture, design, languages, yoga, sports, in big way. Alright, the conventional ones have to be there because we are very big in engineering and conventional things. So diversity can also be an element, but it's now figuring between line number 1 and line number 2, because IITs have started doing something differently now. 3-year, 4-year multidisciplinary, multiple entry exit I'll talk about, because I believe I have a great contribution in making this terminology itself and the policy for it, because this is basically derived from our electronics, which I used to teach, multiple input, multiple output. It's a technology for smart antennas, from where when we were doing this committee report for ABC, we actually used this particular terminology. And then there are various other things which are there. And similarly, there will be a requirement for mature learners,
In fact, 25 to 75 will be called mature learners. Earlier, if you're 25, 13 coming to a UG class or some class, you'll be called daddy or something because they are very senior. So we have given a new name, mature learners, and it's a requirement. What I studied 20 years back, 30 years back, has no meaning, it's no relevance. Relevance may be there, but it has changed very much, so I need to learn a lot of new things. Of course, aspects of internationalization, blending, various other things, examination reforms. And ABC is what I was saying, where I was constantly championing it. The seed was sown by someone in UGC, in fact, Professor Patwardhan, Bhushan Patwardhan. I do not know what was the reason I got picked up in that committee, and then I was like fish to water or something like that. I was in almost all committees for 1.5 to 2 years for them, till we took it to a logical conclusion. But there are challenges which we talk about. The same thing, basically you will call it 4.0. I still see, yesterday I saw a presentation, someone from a reasonably big agency calling it education 2.0. So I do not know who coins these nomenclatures, but once industry 4.0 came, education 4.0 has come, and I have no explanation why 4.0 is a right version. But someone yesterday was inviting for a webinar where they claimed that they will do education 2.0. I think 2.0 is, by the mobile definition, by industry definition, by other definitions, is not very attractive. Anyway, so Viksit Bharat Shiksha Adhishtan, this anyway is an important thing, and whatever I am presenting is not my own. I borrowed it from somewhere, let me tell you. But yesterday evening, and sir, you will be doing it pretty soon, I know. Yesterday evening, on behalf of FICCI, I was representing FICCI on that forum where we were having discussions with the Planning Commission or the related bodies, basically not Planning Commission, DTIO now. And so for 2 hours we were discussing about challenges, the reforms in regulations required, and a little bit about VBSA. They were not getting into the VBSA, but indirectly the references were coming. So I would say basically it got launched or introduced on 15th of December, 16th of December it was repealed. You can say that it cannot go on further. Reason for that, it didn't come through the JPC, Joint Parliamentary Committee, which has 31 members. And I have faced that committee twice, thrice in my life when I was in government. And I must say that it's a tough call to go there. They can ask you anything on earth related to the Constitution, various other aspects of equality, safeguarding, this, that, and you don't have answers for that because you are not sitting in that top position. So I do not know what kind of a journey it will face, but in any case there will be a process delay which will be there. For me, it is an ambitious and open-ended thing. I don't have much of criticism for that. Difficult to comment because still in discussions. And selected councils is where I am uncomfortable. Only you can say the UGC, AICT, and NCT has been captured. Council of Architecture partly, and rest have made an escape. Bar Council or the medical councils or whatever related councils have made an escape. And there are certain councils which have not been even thought of. For example, planning is very important for India. Planning, all smart cities are nothing but planning. And there are no formal councils to regulate what is the planning degree. Everyone requires planners, but the planners technically are not certified planners, basically. So there are certain missing links as far as councils are concerned. There are certain things which have been, which have escaped, and there are certain which are covered partly, like Council of Architecture, and there are certain which are covered fully. But even if the Act gets cleared today, my apprehension is for next 1.5 to 2 years, the old things will prevail. Reason being, it's possibly maybe it will be the same wine in a new bottle kind of a thing to begin with. I do not know what will happen later, but this is my belief, my opinion. So that's a small criticism, but otherwise policy-wise it's good. There has been a matching and mapping done between what NEP said and how VBSA is covering. So this is shown in terms of some matching and mapping. We will not go into that. But just to show you that it's not baseless. It has come from, it has emerged from a set of things which are required. For example, accreditation and quality is the last one. Maybe light but tight kind of a thing is the first one. So like that, it has been captured.
And by the way, I must say that the bottom thing which you are saying, I have taken it from the Center of Educational and Social Studies. They presented something as soon as it came, and I liked it. I liked the presentation very much, and I'm reproducing it. Of course, I have not taken their permission, but it's only for our discussion that I found it very important for me to understand. So it continues to cover various aspects of norms and things which are covered in BBSA, while NEPs laid the foundation for that. And by the way, initially HESI was typically was supposed to be constituted by 4 bodies, 4 arms or 4 legs you can say, but now they have modified and there are only 3 which you know possibly by name: Vinayam Parishad, Gunavatta Parishad and Manak Parishad. In English you can say Regulatory Council, Accreditation Council and Standards Council. So these 3 are there, and the 4th and the most important is the Commission itself which is there. So there are 4 bodies, probably in the previous one it should have been 5. So they have taken the factor of these financing things. The arm which will do the financing element has been removed from this, and I think that's a good decision. UGC also failed in some of the missions earlier because it got tangled with one agency doing everything, and particularly financing, and therefore it became complicated. And later this to cut that down, the RUSA came into being. You know that RUSA was something which cut the control of the UGC on the financial aspect. So same things probably getting reflected in BBSA. And the main body's composition is going to be 13 members, including a chairman. Otherwise, there will be 12 members. And the other 3 bodies will have 14 members. That's what they have projected right now. And that's the constitution of the main commission, which will be there. So there are 5 eminent experts. We wish there will be one from here very soon to represent on that body, because it's required to be from the self-financing side also. And it's required that we should contribute, because today our enrollments are pretty large, our stakes are pretty large, our investments are pretty large. I can just give you a small example that I've had it 7 and 90s, but once in 2020, SRM, my day 1 placement for IT companies, 4 of them, TCS, Wipro, whatever, all of them will come on day 1 because otherwise they don't like that they are not coming on day 1 slot. The placement was 4,679 on day 1 placement. Now, this is one institution giving to IT companies, whereas the entire NIT system of 30 institutions fed with lot of crores of money would not give even half of that very easily to the IT sector. That was the comparison I'm trying to give. So we have a power, we have numbers, quantity, quality, and at 0 cost to the government typically. Alright, so we should be present there. These are the functions of the regulatory higher education. Let's not go into that. These are all defined. They have given a pictorial thing, so I have taken it. These are the functions of an accreditation body. And by the way, what they are likely to do, partly I am involved currently because NAC is going to be the biggest model. NBA is a good model. I like it. Even for NBA, I have done a lot of things to take it to the Washington Accord. But NBA is number-wise probably has limitation. They are doing the program accreditation. And program accreditation maybe in IILM itself could be very, very large if they have to come. They'll have to send teams 3 or 4 or 5, 6 times because at a given shot they don't send more than 5 programs. So that can be, but for accreditation, I think binary is a good approach which is going to be followed in the new setup. We have already prepared things for that. For some reason it's getting delayed, but binary is one to entice people towards college. They will probably be able to understand the basics, concepts, and get a taste of what accreditation or equality probably would mean for them. So, can you explain a little about binary? Because some of our colleagues may not know it. What is this new concept? Okay, probably I'll do it in the end, but I have a lot of information for you. I don't know. You can ask me questions later, whatever, but we can talk here. And this is about the Standards Council. So these are the functions and all those things. Basically, student mobility, for example, ABC will be covered in that. Various other operations and various other frameworks are there. But I'm happy whether the HESI or NEP or BBSA or something prior to that, we have started giving value to the
to the skill. And you introduced me to your hospitality manager right now, and I think he has acquired a great deal of skills right now, and I think that has to be valued. So those things will be now captured in the new education policy or the framework, that the skills will be valued, they can be credited as long as you want it. Your committee, your senate, your board of studies value something as this, and there is a mechanism to assess and record what has been learned or something like that. I think that can be credited. So those are the things which are there. So these are some of the major functions of the three councils which are there under the main council. These are just to show you, okay, you can go through that stress thing yourself and understand what you want to understand out of that. It's not my creation, I have not done a deeper study, but what I'm trying to tell you is, I'm seeing this as a positive document. Not everything is clear. There is one more negative aspect which anyway I am probably going to highlight maybe. And these are the key takeaways which they have listed. What are the key takeaways? So like unified structure was the first point in the lacuna which I showed in the first slide. If you remember, fragmented. So they have done the unified thing. Autonomy, which I love like crazy, I would say. I have written a lot of articles on that. More than articles, I have followed it to it. You give me power, I'll use it. It's as simple as that. Way back when I became a young lecturer, my Vashas ended up coming and he wanted some answer to be given by today evening, 1984. And I was trying to reach him in Delhi because I had a connect with that person. And I was trying to reach him on phone. I couldn't. I tried all those normal trunk calls and then whatever PP and Express and urgent and this and that. And ultimately by evening when I was not getting through, I made a lightning call. That lightning call in 1984 probably costed something like 15% of my monthly salary, and I was obviously concerned that someone's audit will ask me a question that how there, and that was my life's first and last lightning call by the way. Alright, so but I did it because I said my Vice Chancellor wants this me to do, so I have done. So anyway, autonomy is something important. 3-4 times autonomy is coming in these 12 points. The last one, autonomy is coming. Academic freedom, 8th point is autonomy is coming. 5th point, graded autonomy is coming. So autonomy at institution level, autonomy at departmental or some other level, autonomy at a faculty level. So autonomy has to trickle down to the lowest level. And by the way, somewhere, not written, but maybe outcome-based approach or maybe something like student protection is also an autonomy for them. That they decide what they want to learn rather than we decide what we want to teach. Alright, so autonomy is the core of this whole thing. But autonomy also has to be guarded. It doesn't mean that I can say anything, abuse anyone or disregard anyone. Autonomy has to be within the guardrails and therefore these regulations, etc. So I hope I set the tone that the frameworks are going to be alright for us. One of the negative things is in this framework of BBSA, maybe I have not highlighted, they have kept what you call the penalties for wrongdoing as criminal penalties also, in case some of you have read. Anyone from the legal side here? Okay, madam. So maybe you can explain them a little bit later, if you so wish, what is the meaning of criminal or other this thing. But I have faced it because I have been a long time Vice Chancellor. There are certain things which will happen, and those are unwanted interruptions in our functioning. As I said, rather than engineer and technologist, I became a journalist of everything. When I was establishing NIT Delhi, first thing I took to the board that I give my land and my contract to, let's say, NBCC or anyone for that matter, or your neighbors. I went to them also, that please create my campus. You run it, whatever those models are, run, operate, invest, own, kind of those models. You can do it because I'm not an expert in building, I'm not an expert in running and maintaining hostels, I'm not an expert in serving them food, various other things which are required, so why don't you take a contract? Obviously, they are also government agencies like me and they with folded hands said, sir, हम आप जो कहेंगे कर देंगे, पर हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे जो आप कह रहे हैं. But fortunately, this model has been picked up now in the government and is being followed because as an academic, I should concentrate myself on the academic aspects or research aspects rather than the hugely administrative and functional and managerial kind of aspects. So if you can minimize that, automate them,
use AI, use ERP, now agentic AI. Yesterday, day before yesterday, there was an article. I tried to read it, I couldn't figure out everything, but my old institution, Manipal, is claiming that they are starting with agentic AI use in their functioning, and they say that eventually there will be 50 verticals where the agentic AI will be used. Right now, they are starting with 5. So maybe you search in the net and you'll find out what is to be done. So with that, you will reduce your what you call protocol burden or administrative overheads, and you will focus on your core activity of academics and research. Okay, sir wanted me to talk about some challenges and some opportunities. I'm not doing any SWOT, etc. Certainly not good at that. But some SWOT was done by the NEP or BBSA and other things also. So challenges for higher education, in my opinion, are decaying value of a formal degree. This I have been warning my fellow colleagues, particularly seniors. I don't want to scare all of you, but the senior ones, that the only difference between an edtech company and between us, what we do is they also train their students, give skills, educate them on new technologies or processes or whatever. We also do the same thing. They end up giving a piece of paper called certificate, and we give a piece of paper called degree. Eventually, big companies have understood that skills or the abilities count rather than that piece of paper, which is typically favored in government. So if that distinction vanishes, we are in trouble. Institutions will not be favored, and eventually that may be the case, is my opinion. There are warnings from the top AI people in the world. If you are reading articles regularly, some of them say that the universities will cease to exist in the form they are. So I do not know if this is a challenge or not, but it's less challenge for Chaturvedi Saab and me, because we'll be hanging our books very soon, possibly. Yeah, but some of you will have to rise to the occasion to face that heat or challenge and come out with right solutions. I hope you understood what I'm trying to say to you. Credit-based schemes implementing ABC and MEME. I can say, and yesterday also I said, and Niti Aayog people were there, Shashank ji was there, and Shashank ji's boss was also there, our lady. And they clearly understood. I said, we have made a mess of ABC. Academic Bank of Credit is a credit-based scheme. I asked them, kind of, not pointedly, but I said, tell me which institution is doing credit-based admissions. Everyone is doing a degree-based admission. हमारे यहाँ डिप्लोमा के लिए आ जाइए, हमारे यहाँ डिग्री के लिए आ जाइए, ये ले लीजिए, MBA ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, और कौन सी इंस्टीट्यूशन ने अपनी फीस क्रेडिट के बेस पे बताई, सब पूरी प्रोग्राम की बताते हैं. तो द पॉइंट इज, जिसका बेस ही नहीं है उस पर बिल्डिंग खड़ी हो गई है, और अभी तक ABC व्हाटएवर यू कॉल इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड कीपिंग. जैसे आपके CDSL, NDSL जो भी ये कुछ भी करती आई है, कोई भी रिकॉर्ड बना लिया आपने, पहले भी बनाए थे हमने, वही रिकॉर्ड हो रहा है. सिर्फ इतना ही है कि अब उसका स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली उसमें है कि उसको उसका रिकॉर्ड पता है, वो बताएगा ये क्रेडिट या डिसक्रेडिट कर दो, पर इससे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है स्टूडेंट. इसमें तो स्टूडेंट विल डिसाइड. आई टॉक अबाउट ABC लेटर, बट दिस इम्प्लीमेंटिंग दिस हम सबकी नींव हिल जानी. मैं यहाँ पे आता हूँ एक अच्छा इंस्टीट्यूशन समझ के, और मान लो ये इंस्टीट्यूशन मुझे कुछ नहीं करती है, मैं पड़ोस में जा सकता हूँ, या मैं दूसरे साल भी जा सकता हूँ, तीसरे साल भी जा सकता हूँ, या आपके यहाँ कोई बाहर जा सकता. इट विल बी अ फ्लोटिंग एडमिशन, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बेस्ड ऑन व्हाट यू डिलीवर, हाउ यू डिलीवर एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड देयरफॉर वो जो आपके जो बड़े बड़े प्लान्स हैं कि भाई अभी 5000 स्टूडेंट है, अगली बार 6000, फिर 7000, ये फलाना, ये सब हो सकता है खत्म होने लगे या हिलने लगे. ये बड़े चैलेंजेस हैं. ये स्टूडेंट सेंट्रिसिटी का रिजल्ट है, बट अल्टीमेटली कस्टमर सेंट्रिसिटी नहीं होगी तो हम एज अ कस्टमर खुश नहीं है. स्टूडेंट सेंट्रिसिटी नहीं होगी तो स्टूडेंट भी खुश नहीं है. स्टूडेंट को वो पढ़ना चाहिए जो पढ़ना चाहता है, ना कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ. ये मैं ABC का एक स्लाइड है जब बताऊंगा आपको. क्वालिटी ऑफ टीचर्स, I should not say much because I'm sitting in the midst of senior people. A large number of that, particularly I can say about engineering, I don't comment much on the other disciplines, are not the teachers who are teachers by choice, they are by chance. सब कुछ छोड़ते छोड़ते आप उनसे कभी इंटरव्यू में पूछ लो कि यहाँ क्यों आए, तो सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, और आने के बाद भी उसको लगता है कि मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ तो एक बार दो बार वो और दे दूँ, जो भी देने हैं, जो भी वो कर रहे होंगे, जो उनकी इच्छा है.
उस बीच में ना तो पढ़ाई लिखाई यहाँ पे ढंग से करवाते हैं, ना वहाँ का ढंग से होता है, एंड दे बिकम laggards, lifelong laggards, I would say, LLL. All right, our lifelong laggards then ruin the education system for us. वो किसी स्टूडेंट का भला नहीं करते हैं टिपिकली. तो वो मेरी परसेंटेज शुरू में तो 10 और 90% थी, चॉइस वाले 10% और बिना चॉइस वाले 90. अब शायद कुछ चेंज हुई तो मुझे नहीं पता, बट यू कैन डू एन एनालिसिस एंड देन यू. My only communication to all those when I talk to the faculty at large, and by the way, I was quite used to of doing open houses with my faculty wherever, whichever institution I have been, and I have done faculty open houses with something like 2,000 more faculty. In SRM I had something like 3,200 faculty, 250 faculty when I joined. So we have done open houses with them, and then I tell them only one thing, that having become faculty member, now you religiously own this. You adopt to the requirements and practice this genuinely and properly, and your life will be made, because there are a lot of beauty in the academic profession. Longevity is one, family care is one, associated with knowledge, which is the century of knowledge, also helps you. All other places, the pressures of work and delivering certain things, maybe marketing, production, or whatever that may be, profitability, are not necessarily required here. They are there because ultimately business-like things come everywhere, but they are much lesser here. So that's about thing. Benchmarking, accreditation will keep changing. As an example, I'll tell you something about patenting later, so you'll probably understand that आपने आज जो अचीव करा, आप खुश हो गए और आप बैठ गए, तो पता पड़ा कल तक आप आउटडेटेड हो जाएंगे. So that will be a challenge. Financing and funding will always be challenge, particularly if you are wanting to do research. I understand basic teaching, learning, admissions, ये वो सब ठीक है, most of them are managing. But getting money to do research will not be possible easily, and research is to be done. Those who are thinking, or those who have mindset that research is not required, I would tend to call them, it's a corrupted mind, or not a right mind, if I may say so, because as a teacher and a student, your relationship is more about teaching learning. And to do teaching learning, you are assimilating information and disseminating information. आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, आप जानकारी बांट रहे हैं. मैं जर्नल से पढ़ता हूँ, बुक से पढ़ता हूँ, सर की लिखी हुई बुक्स है, मैंने कोई मटेरियल पढ़ा वेब पे, मैंने जानकारी इकट्ठी करी. मैंने आज भी आपको बताई कि मैंने BBSA की जानकारी जहाँ से मिली मैंने आपको बता दी. तो ये मेरा हो गया टीचिंग लर्निंग या जो भी आप कहिए. बट the most important, if you want to be a leader, is not assimilation and not dissemination alone. It's the generation of information. That who generates that information, who generates that policy, who generates those principles, who generates those new developments is important. And therefore, it's an integral part of teaching, learning, or a faculty's life that we do assimilation, dissemination, and generation. And generation is nothing but research. Generating something new is nothing but research. So आपको research करना ही है. Those faculties typically you are not doing it will be compromising on their career. You can call yourself best teacher. Many of them tend to call. Agreed. I am not saying that the best teacher cannot exist, but they are not easy measurements for you to be recognized. And this we were discussing yesterday afternoon. That how do I recognize what happens inside the class unless I put everything under the camera, scanner, and evaluation and all that. And which can be very subjective. A topper and a favorite student will keep giving you 10 out of 10, and a bottomer will keep giving you 0 out of 10. Because he knows that he will not get the best, and they are both biased, by the way. And therefore the assessment is very wrong. And one of the assessment which is there for a good teacher, scale which can be used is very biased. That my pass percentage is 100 in the class. Institution might think, oh, very good, board has done well, or exam has done very well, but eventually I may be a very poor teacher and I set up a very simple question paper and everyone passed, or I did a liberal grading, everyone passed, so I may not be a good teacher at all. So these are biased things which are there. Outcome and impact measurement are very important. Output भी खत्म हो गया, input पूरा ही खत्म कर दिया अभी. Output भी खत्म हो गया कि मैंने 10 PhD करवा दिया, 50 करवा दी. उसका impact क्या है? क्या होने वाला और उसका मेजरमेंट क्या है? दुनिया में है ही नहीं. People are struggling. My company is doing a big work. I cannot talk about it right now. We are creating a scale of around 31 parameters and under 5 different heads.
which eventually will do something. And we have done something in some sporadic cases of defining. One of them is called as a fourth generation university as a concept. I'm not going to introduce that here, but that's an impact measurement. All right. And of course, the challenge is uncontrolled expansion. रोज दिन दुगनी रात चौगनी कितनी यूनिवर्सिटीज हो गई आपने कभी बताएगा अभी मुझे यहाँ पर आप तो दिल्ली में बैठे हैं कहीं कोई नज़र पड़ी हो गई कुछ पढ़ते लिखते हुए या अखबार में My latest, when I was the AIU president, we were calling figure as 900 के आसपास का कह रहे थे 1000 कह दीजिए आज की तारीख में करीब करीब 1400 पे पहुँच रहे हैं 1390 is the 91 is the last figure I read somewhere authentically 1391. All right, so that's a large. And by the way, when the St. Petersburg Committee Knowledge Commission gave a report 20 years back, it indicated about 1500 universities to be there in India, and I think people like me laughed at it. Maybe very mature, we didn't have that perspective of the country and all that, and it's becoming true, not true, it's just come true in 10-15 years, and probably it will surpass that number very easily. So uncontrolled expansion I'm calling it because with quality or without quality, with interest or without interest, things are coming up in the education space. And of course global scenario of clashes, challenges, instability is there. I'm not an expert on that, someone from the political or other sciences possibly will be handling this. But this has an interplay in what we are doing here and what someone else will do. Where our students will go, where medical things will happen. Even now, students were there in Iran for medical studies. Can you believe? Iran was under threat for last 6 months or whatever time it was happening. Even then, we had to evacuate 1,000 medical students from Iran. Forget about what happened in so-called Russia and Ukraine and Poland kind of a thing which was happening. Okay, I mean, Poland didn't get affected, but we had to withdraw a large number of people from Poland also. So those are the challenges which happen, Belarus, Poland, everything. So these are the challenges. So I'm not necessarily giving you solutions, but some solutions will come indirectly. You will have to interpret it in your own way. Opportunities, far too many. Assured GER, government is working for that. पैसा दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, एडवाइस कर रही है, कोर्स कर रही है, आपको कॉलेजेस खुलवा रही है, ब्रांचेस खुलवा रही हैं. GER will go to 50% on an increasing population base, not on a fixed population base. We are currently, some people still say 27%, I don't believe that, but I have also read the figure around 30-31% and I think we are there. But imagine कि अभी हमको 20% और बढ़ाना, हमने 30% तो 80 साल में हासिल करा है और 20% अगर हमें 10 साल में हासिल करना है तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ी सी भी दुकान हमारी सही चली तो हम कहीं पहुंच जाएंगे. I'm using a wrong word here because it has gone into a commercial mode to some extent. Even government things, IITs which were keeping everything to their chest. When I was in Chennai, IIT Metros came to us when they were launching their online programs. That how will they handle if there is a big this thing, and we discussed and we found that we cannot help them because the way they expect us to do certain things, but they are handling 10,000 students online in a simple BSc program. तो वो भी उसी मोड में चले गए. हो सकता है कुछ अच्छा भी उनका सोच हो, बट इतनी स्केल भी एक साथ करना 0 से 10,000 is a very big thing. Anyway, world is now investing in India. सब लाइन लगा के आ रहे हैं. मेरे ख्याल से चतुर्वेदी साहब मिले ही होंगे काफ़ी लोगों से, चाहे गुड़गांव है, चाहे दिल्ली है, चाहे गांधीनगर है, चाहे बेंगलोर है, बॉम्बे है, सब जगह ऑस्ट्रेलियन एंड English universities are coming, UK, and many more are planning to come here and there. Once again, we can become an international hub for education. जो हम नालंदा या तक्षशिला की बात करते हैं, पता नहीं हो सकता है कि हम बड़े हब बन जाए. वो इसलिए कि हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास इंटरेस्ट है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है. Only thing is we need good students and a little bit of good propping up of research, and then we can be there. So maybe what happened for 15, 17 centuries possibly can be reignited. So that's a potential opportunity. Outcome-oriented education and research can be good for societal good, industrial good, or whatever good. So you will get recognition, you will get more money, which was not happening to us. Scaling up of new generational approaches for teaching learning, which I am going to define. That means
your life as a teacher can become better if you are able to adopt to that very easily and you can scale up your operations. अभी आप 100-50 लोगों को पढ़ाते हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी भर इलेक्ट्रॉनिक्स में for some reason we had large number of students, 80 की क्लास थी तो full throttle जाना पड़ता था. Classes were obviously noisy, आस-पास जो भी environment जैसा भी था. But some 6 years back, 2019, I was invited by Microsoft to US for their academic conference, and they had invited one young guy of 28 years old from New South Wales, जो technology को खूब use करता था, and I must say that I was hugely impressed by that guy's presentation and whatever he talked about that. Very lean and thin, आप उसको बाहर देखेंगे तो आपको student नहीं लगेगा, and then he convinced some of us that he is handling a class of 500 students. That's also fine. बड़ा नंबर है उस टाइम 2019 की बात करता हूँ आपको 7 साल पहले की बात. बट उस सब के बावजूद उसने हमें ये भी समझा दिया कि इन 500 बच्चों को वो पर्सनल अटेंशन दे पा रहा है. ये बड़ी बात थी. 500 बच्चों को हम 500 में से 5 के नाम जानना हमें मुश्किल हो जाएगा अगर 500 की क्लास में बैठेंगे तो अटेंडेंस लेते लेते या कुछ उसका मैकेनिज्म बनाते ही हम फंस जाएंगे. वहाँ जरूरत नहीं होगी अटेंडेंस. But he was able to give personal attention using all the tools, tackles, social media, this assignment, evaluation, AI, whatever it may be. At that time, he was trying to do it, all those things. So basically, use technology for teaching, learning. Your life can be better. But you have to learn it. It's not कि आपने कोई बटन दबाया और automatically हो जाएगा. आपके लिए बड़ा मुश्किल है. Overall quality improvement. We are becoming conscious. So those are also opportunities. ग्रोथ ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मैच्योर लर्नर्स. तो अब आपके पास नई क्लाइंटल आने लगी. आपके पास तो शायद होगी भी मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की वजह से काफ़ी कुछ. बट मैच्योर लर्नर्स 25 से 75 के जो लोग होंगे वो भी अब लार्ज नंबर में आने लगेंगे. हो सकता है वो डिग्री नहीं करें, डिप्लोमा ही करें, सर्टिफिकेट करें, पर आएंगे आपके पास. सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी एंड बेटर एवेन्यूज फॉर पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री. एनीवे दिस इज हैपनिंग. मेरे ख्याल से आज के तक में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं बची जिसने अपनी इंस्टीट्यूशन नहीं खोली इन्वेस्टमेंट के अलावा. टाटास भी हैं, बिरलास भी हैं, लक्ष्मीवास मित्तल भी है, शिव नाडार्स भी हैं, जो भी आप नाम लें उनकी आपको खुद इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे. दे आल्सो इन्वेस्ट इन पार्टनर. So these are the opportunities. Any question till now? Anything which I missed and challenges or opportunities? नहीं, आप पूरा कर लें. ठीक है. 5 मिनट का हम ब्रेक देंगे. अच्छा. बायो ब्रेक और फिर क्वेश्चन आंसर्स. Sure. I'm open to that. So with the base set, with the challenges and opportunities known, with the VBSA and HESI and NEP and all that known, with general things known about the institution, let's talk about flexible. When I'm flexible in my life, I do the same thing. When I want to eat, I eat. What I want to wear, I wear. When I want to see cinema, I see. When I want to play, I play. When I want to do shopping, I do that shopping. So I have flexibility in everything in my life, except for education. वो मैं IIT में जाऊँगा तो बोले भैया इस दिन आप काउंसलिंग पे आ जाना, नहीं तो आपका एडमिशन करा देना. पीछे आए तो वो ब्रांच नहीं मिलेगी, उसके भी पीछे आए तो एडमिशन नहीं मिलेगा. उसके बाद इस दिन रिपोर्ट कर देना, इतनी अटेंडेंस कर लेना, नहीं तो कुछ नहीं होगा, पास नहीं होंगे. So it's so rigid that everything else in your life is flexible. When you want to buy a car, you have thousands of choices. When you want to buy clothes, you have. When you want to eat, thousands of restaurants. But जो लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी लाइफ को बनाती है, एजुकेशन, उसमें तो बहुत कम है. ठीक है. So basically, this is, I cannot explain much, but this is something with which I try to hit your mind by saying कि अगर मैं IILM में आज का नया स्टूडेंट होता तो मैं चतुर्वेदी साहब को इन सब चीज़ के लिए कहता कि साहब मैं मेरा टीचर चूज़ करूँगा उस सब्जेक्ट के लिए जो आप पढ़ाना चाहते हैं, और मेरा टाइम भी करूँगा कि मैं सुबह अच्छा नहीं पढ़ता हूँ या रात को अच्छा नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से करूँगा. मैं ये भी बताऊँगा कि ये कोर्स मुझे एडवांस करना है या नहीं करना है, या मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, तो आप मुझे चुनने दें. मैं मेरी जैसे कपड़ा मेरी चॉइस का बनाता हूँ. बुटीक में जाके टेलर को जाते ही सबसे पहले बोलता हूँ ऐसी कॉलर बना दोगे, ऐसी पॉकेट बना दोगे, ये बटन लगा दोगे, जो भी है कोट के लिए मान लीजिए. खाने में जाते ही मैं बोलता हूँ मसाला कम, तेल ये फलाना, ये गरम, ये ज़्यादा सिका हुआ, जो भी मैं बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं. मतलब तो बेसिकली हम अपना फूड डिज़ाइन करते हैं, कपड़े डिज़ाइन करते हैं, हम अपना घर डिज़ाइन करते हैं, चाहे हम आर्किटेक्ट नहीं हैं तो भी.
और हमारे बच्चे तो हमारी कार डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप घर में बोल देंगे कि आप नई कार खरीदी तो बच्चा कूद के सबसे पहले आएगा कि कौन सी कार चाहिए, तो वो उनके दिमाग में है ये सारे कंसेप्ट। तो बच्चे के दिमाग में ये कंसेप्ट होगा कि मुझे पढ़ना क्या है। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। स्टडी थ्रू एनी मोड, मुझे रात को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, ग्रुप में पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना है, ये पढ़ना है। मैं सुन नहीं सकता हूँ अच्छा, और मैं आके बैठता हूँ क्लास में पीछे बैठ जाता हूँ, टीचर क्या करेगा और मैं क्या करूँगा। टेक्नोलॉजी कैन बी माई मोड, दैट हाउ डू आई डू इट। मैंने साउथ में इंजीनियरिंग करी। मैं शुरू में मेरे मुश्किल होती थी उनके प्रोनाउंसिएशंस मुझे, हमें वैसे भी अंग्रेजी नहीं आती थी। हमने छठी क्लास में तो ABCD लिखनी चालू करी थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी, और फिर उनकी अंग्रेजी और मुश्किल हो गई थी। ऐसे कहते जब UK गया तो पहले 3 महीने तक तो आई वाज लॉस्ट बाय आयरिश प्रोनाउंसिएशन से। एंड आफ्टर अ मंथ और 2 माय वाइफ एंड यंग सन हु वाज 5 years old केम। उन्होंने सब कुछ 15 दिन में सीख लिया, और मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या है वो क्या बोल रहे हैं। तो मैं कुछ भी देखता था तो उनसे धीरे से पूछता था क्या बोल रहा है। तो ये चैलेंजेस रहते हैं। तो पर टेक्नोलॉजी कैन रिमूव दोज चैलेंजेस व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। और सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी में बाकी सारी चीज़ें आप अपनी इच्छा से करते हो, एग्जाम तो कभी भी आप अपनी इच्छा से दे ही नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आई डोंट नो सर विल एग्री और नॉट, सर विल से भैया बगल वाली में जाओ हमें माफ करो। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी ऑफ एक्सट्रीम काइंड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नॉट दैट एवरीवन विल डिमांड दैट। हिंदुस्तानी बच्चे बहुत सबड्यूड हैं, बहुत सबमिसिव हैं। उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है कि वो घर में जब 2, 4, 5 साल के होते हैं, ये मत रखो, ये रखो, ये करो, इसके सामने ऐसे बैठो, इसके पैर रखो, वगैरह वगैरह जो भी होता है वो सारा, तो उसमें वो बहुत सबड्यूड होता है। आपकी क्लास में भी वो शायद ही कभी सवाल पूछते हैं वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, और उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि आपके अगेंस्ट कुछ बोल दे, चाहे आप गलत कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। तो उस वजह से ये कई चीज़ें हो नहीं रही, पर होनी चाहिए अगर एजुकेशन को हमें अच्छा करना है। इसकी लिस्ट में आप आज शाम को सोने के पहले एक आइटम आप अपनी तरफ से और ऐड कर देना, तब मेरा ये प्रयास सार्थक होगा कि आपने उसको कुछ नया ऐड करा है। ठीक है, that's my request to you. Anyway, these are all educational transformation, and basically it means that focus is shifted from means of education to the ends, aims, objectives of education. मैं क्यों सीखना, क्या करना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ। मैं ABC में एक एग्जाम्पल दूंगा शायद इसका, या अभी भी दे सकता हूँ कि मान लीजिए मेरे फादर का केमिकल का बिजनेस, वो चाहते हैं मैं केमिकल इंजीनियरिंग करूँ, तो मैं एक वर्टिकल को ले सकता हूँ। पर दूसरा वर्टिकल लूँगा कि मुझे बिजनेस मैनेज करना, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन कुछ होगा तो मैं मैनेजमेंट भी कर लूँगा। तीसरा मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक के अंदर है, मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है, जो भी है। क्या मुझे इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के मैं एक डिग्री बना सकता हूँ? राइट नाउ आंसर इज नो। Okay, but if I can do that degree, it will really serve the purpose of my education. I don't have to expert that मैं उसमें बहुत भारी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे बेसिक सीखना है और मुझे अपना बिजनेस चलाना है, मुझे क्लियर है, मेरी फैमिली को क्लियर है। तो वो सब चीज़ें, ये बेसिकली ये स्टेटमेंट डिफाइन करता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट को होनी चाहिए। So if इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो we need unique teaching learning approaches, and one of these would be something like that. हो सकता है आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं दिखती, तो मैं आपको बता देता हूँ कि येलो ब्लॉक डिमांड ड्रिवन, तो वो आप लोग कर देते हैं। सबने AI कर दी है, सारी ब्रांचेस बंद हो गई इंजीनियरिंग के अंदर, सबने AI कर दी, पर AI का किसी को भी कुछ नहीं पता है ज़्यादा, ठीक है, एक्सपर्ट्स तो है ही नहीं। हमने सबने कर दी है। फॉर्चुनेटली मैं अब एजुकेशन के बिजनेस में नहीं, आई हैव गॉन इनटू समथिंग एल्स, बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। बट basically merging of regular move online virtual modes is a very good thing. It suits the taste and requirement of a person. मैं physically handicapped हूँ, एक difficulty hearing और writing वगैरह, तो ये सब चीज़ें मैं दूसरे मोड यूज़ कर सकता हूँ। फीडबैक कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये जो ब्राउन बॉक्स है ये फीडबैक के बारे में बता रहा है। HOD अवर करें सप्ताह में एक बार, ओपन हाउसेस करें एक सेमेस्टर में एक बार, रिप्रेजेंटेशन इन फैकल्टी बोर्ड्स you can do it possibly once in a quarter or once in 6 months. And then एक यूनिक एग्जाम्पल जो मैं सीखा था, इंडो-US कोलैबोरेशन फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन, एक इनिशिएटिव था जिसको देश पांडे और इन्फोसिस की फाउंडेशन ने सपोर्ट करा था 2006-07 में। आई एम अ फाउंडर मेंबर ऑफ दैट। और उसमें एक कोई बहुत ही लर्नेड एजुकेशनिस्ट बेसिकली ही सेड कि अगर मुझे कोई फीडबैक लेना, और वो करीब 65-70 साल के होंगे उस टाइम जब उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी कि मैंने फीडबैक नहीं लिया। उन्होंने ये कहा
कि सबसे बढ़िया तरीका है कि क्लास में जाओ, एक A4 साइज का पेपर ले लो, उसके पर्चे तोड़ दो, मतलब काट दो, 2 पेपर ले लो, 50, 60, 30 जितनी पर्ची बनानी फाड़ के रफली कर दो और बांट दो बच्चों में। क्लास खत्म हो तो उस बच्चों को बोलो कि आज क्या सबसे बेस्ट कंसेप्ट समझाया था और आज जो कंसेप्ट समझाया जो आपको समझ में नहीं आया या वर्स्ट है वो दोनों लिख दो, बाकी कुछ नहीं लिखना और क्लास से जाते हुए पर्ची डिब्बे में डाल दो। नाउ दैट्स एन इंस्टेंट फीडबैक टू अ स्टूडेंट, टू अ टीचर। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आ रहा हूँ मुझे क्या रिवाइज करना है, किसको एम्फेसाइज करना है, किसको नहीं करना है, वो सब मुझे मिल जाए। दैट्स द बेस्ट थिंग। सो वी नीड टू डू सच प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स। Student abroad program, I think exposure is must. I changed my life because of exposure. Till that time I was also very subdued, yes man, teacher kind of a thing. I didn't believe in myself. I thought हमें कुछ आता नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। पर जाने के बाद गए तब भी हिल गए कि यहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे, पर मेरे ख्याल से 1 महीने बाद ये हो गया कि अब वो हमारे बिना कैसे सर्वाइव करेंगे। तो एक्सपोजर इज मस्ट। स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम इज अ गुड थिंग। ऑनलाइन एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम आप लोग कितने करते हैं, जरा हाथ उठा दें, उठा सकते हैं तो ओपन 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 कुछ लोग करते हैं, अच्छी बात है। मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन 1983 में दिया था। मैं क्लास का टॉपर था, पूरी इंस्टीट्यूशन का टॉपर था, तो भी मेरी जान निकल गई उस सब्जेक्ट को पास करने के अंदर। दैट्स द टफनेस ओपन बुक कैन ऑफर टू यू, एंड ओपन बुक इज अ लाइफ एग्जामिनेशन। आज आप जो मुझसे सवाल पूछेंगे किसी किताब में नहीं लिखा हो, उसका जवाब नहीं लिखा हो और मुझे पता भी नहीं, मुझसे वो सवाल किए जाएंगे, किए जा सकते हैं। वो ओपन बुक अप्रोच है कि कुछ भी पूछा जा सकता है और आपका जो भी रेफरेंस है उससे जवाब, मुझे आज जवाब नहीं आएगा, जब आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा यार मैं कल परसों कहीं से देख के समझ के डिस्कस करके आपका जवाब दे दूंगा, ऐसा हो सकता है। दैट्स एन ओपन बुक। सो बियॉन्ड सी टिल स्कूल यू आर वेरी कन्फाइंड टू टेक्स्ट बुक और स्टीरियोटाइप फ्रेमवर्क जहाँ से आपको पूछा जाएगा। When you go beyond the higher education, वहाँ पे फ्रेमवर्क पूरा ही हट गया है कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। जैसे मैं वाइस चांसलर बनाता हूँ या सर को कुछ भी फाइनेंस, लीगल, फलाना, डिगड़ा, HR, कुछ भी जो भी है, टेक्नोलॉजी, सर may not be from technology but he has to adopt to technology. I may not be from finance or HR but I have to adopt to that. तो ये सवाल जवाब हमें करना ही पड़ता है। तो हायर एजुकेशन इज अ ट्रांजिशन बिटवीन अ फिक्स्ड फ्रेमवर्क टू अ ओपन फ्रेमवर्क। अगर हमें बच्चों को अच्छे से तैयार करना है तो उनको ओपन बुक की तरफ हमें रेडीनेस करनी है, इसलिए मैंने लिखा है। और एक ये लिखा है कि स्पेशल सेमेस्टर एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एग्जांपल, कि आप अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, उसके मन में कीड़ा है, सोच है, आइडिया है, वो वर्क कर रहा है, तो उसको 5वें 6ठे सेमेस्टर से चालू करवा दीजिए। मान लीजिए 4 साल का प्रोग्राम है, तो 8वें सेमेस्टर में वो पूरा काम कोई पढ़ाई लिखाई नहीं एंटरप्रेन्योरशिप का करेगा, इसलिए कि उसको पूरी फैसिलिटीज़ है इंस्टीट्यूशन में, टेक्निकल सपोर्ट है, या फंडामेंटल्स जो भी हैं, और खूब सारे बच्चे हैं जो उसके पास फ्री में काम करेंगे, उससे सीखेंगे भी। और अगर वो किसी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे चला जाएगा, फेल हो जाता है तो उसको नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट करवा दीजिए, वापस उसकी ज़िंदगी उसी ट्रैक पे चली जाएगी, इस टाइप से। पर आप जब उसको ये एंटरप्रेन्योरशिप के टाइम नहीं देते हैं, कॉलेज में रहते हैं, उसको खाली पाठ पढ़ाते रहते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाते रहते हैं, पास पे ही करते हैं, तो जब वो ग्रेजुएट करता है 10th के मार्क्स से, सोसाइटी उसको पूछती भाई क्या हुआ तुम्हारे प्लेसमेंट, तो वो फिर एंटरप्रेन्योरशिप में जा नहीं पाता। तो ये क्या है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग एवेन्यूज के अंदर ये भी सब चीज़ें आप करते हैं, पर लेबोरेटरी को मैं चाहूँगा कम से कम साल में एक वर्चुअल लेबोरेटरी हो। वर्चुअल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी इंपॉर्टेंस है कि वर्चुअल इज 24/7 all days, जबकि फिजिकल लेबोरेटरीज आर ओनली 5 days and maybe 6 hours a day, something like that. फिजिकल में आप लेबोरेटरीज को डैमेज कर सकते हैं या इक्विपमेंट को कर सकते हैं, वर्चुअल में नहीं कर सकते बिकॉज उसमें प्रोग्राम प्रोटोकॉल्स और कंट्रोल्स हैं, एंड इंडिविजुअली करना पड़ेगा वर्चुअल में। फिजिकल में 5-5 का ग्रुप बैठता, कोई कुछ नहीं करता, पुरानी रीडिंग को कॉपी मार के नया एक्सपेरिमेंट बन जाता है। कई बार इंजीनियरिंग में ऐसा पहले बहुत होता था। क्लासेस आप करते हैं, बट आई वुड वांट फ्लिप, शायद मैनेजमेंट में ज़्यादा प्रिवेलिंग है, so you should do it. Hackathons is a very good way. Self studies are the most important. If there is one attribute which I want to deliver to a current generation of students, would be what I have written at the end of this. So जो मैंने टॉपिक लिखा है उसके नीचे जो लिखे ये डोमेन्स हिल रही हैं, ये डोमेन्स चेंज हो रही हैं। So self study का मतलब यहाँ पे है I am able to deliver to a student an ability to learn by himself or herself, and I call that as a learnability. For me, the biggest skill I would like to deliver to any student is
not problem solving, not communication, not this, not that, जो लिस्ट आती रहती है कहीं ना कहीं से किसी भी बॉडी से. My skill would be learnability. तो वो सीख सकता है, कुछ कर सकता है, ऐसा इस टाइप का हो सकता है. Rest of the things are anyway known to you. I'll not explain. Okay. And I am a strong advocate of blended teaching learning. I already said blended में technology आती ही है. I was part of the UGC committee which drew something on this particular thing. And I'm not explaining anything, but blended को कई लोग मान लेते हैं कि online और offline, बस ये सिर्फ दो ही नाम nomenclature से मानते हैं. जब हमारी कमेटी की रिपोर्ट दी थी, तो दिल्ली में काफ़ी हल्ला हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था कि साहब ये अगर ऑनलाइन कर देंगे तो टीचर्स की पोजीशन खत्म हो जाएगी, सारे एडॉक टीचर्स गायब हो जाएंगे. सो यू अंडरस्टैंड ये किसने करा होगा, क्या करा होगा, बट दोस आर मिसकंसेप्शंस एंड मिसनॉर्म्स. टेक्नोलॉजी कहाँ आके हमको पूरा सब्स्टिट्यूट करता है, कहीं नहीं करता, बिकॉज इट कीप्स एमर्जिंग. सो ये सारे फॉर्म्स हो सकते हैं ब्लेंडेड के, अगर आप समझना चाहिए. इन क्लास, आउट क्लास, face to face or remote, synchronous, non-synchronous, real, virtual, online e-learning, what are singular group. These can be various combinations of these can be what I call blended. Okay, some of these may have overlap, so don't worry about terminologies. But what I'm saying, broaden your horizon that the blended can be of many things, not just offline and online. हमारे लिए वो it became a bane during Corona करे online मतलब कुछ भी ढंग से नहीं होता है. I think that's a wrong notion which is there. So anyway, I just wanted to change that notion. So इसलिए ये point यहाँ पे है. और ये सारे कई सारे नाम दिए गए हैं time to time. Blended, online, virtual, distance, hybrid, digital, physical, lifelike, flexible, whatever that may be. I was by the way member of the Distance Education Council of the government before we closed it because we were facing a lot of heat and challenges there. But I loved the name distance at that time because I thought this is something which is for lifelong. But now it has been re-christianed. My favorite is the one which is there in the last. I call it flexible. Flexible because it's time-wise flexible, course-wise flexible, assessment-wise flexible, fees-wise flexible, institute-wise flexible, various other things flexible. So I will not call it online or offline or virtual or real or whatever. I'll call it flexible. If I were a minister here, I would have immediately coined the flexible word for that. It's up to you, whatever you want to follow. All right. And the learning process obviously could be very many. Some of you are following, the ones in the red are being followed, problem solving, projects, internships you are doing. But the one in the pink, brainstorming, concept and mind mapping, creative presentations are less followed. Typically when the class sizes are big, so you need to do something like that. Case studies आप लोग करते हैं. This concept and mind mapping is like a flow chart जो computer algorithms, logic वगैरह उस टाइप से चीजें हैं. So there can be many things. Maybe this list is highly incomplete. Once again, I would request you to add something from your side, or if you know something, you can always share it with others that others can also follow. Educational examination techniques. तो खाली पढ़ाने लिखाने से नहीं, examination में भी reforms की जरूरत है. तो उसमें continuous evaluation तो आप लोग करते ही हैं, online भी करते हैं, पर उसको virtual laboratory वाला भी online कीजिए. But one of the best things, I was part of the Kakurkar committee where we reviewed IITs and NITs after 40-50 years of their existence, and that's where we kind of envisioned that and projected that. You want to improve the general performance of Indian students, means जो नीचे वाला strata है उसको ऊपर लाना है. Group performance evaluation will be fine. Let's say we are 40 people, हमने 4 ग्रुप में बांट दिया. जो पहले टॉप 10 हैं उनसे एक ग्रुप चालू हुआ, मतलब हर एक टॉप 10 ग्रुप बनाएंगे, एक उसमें से लिया और एक लास्ट में से लिया. अब मान लीजिए मैं लास्ट में हूँ और चतुर्वेदी साहब टॉप वाले में से आए, बीच में से कोई 2 लोग और आ गए. अब चतुर्वेदी साहब संचय जी का ध्यान रखेंगे, तो उनको पता है कि अगर संचय जी ने डुबा दिया ग्रुप परफॉर्मेंस तो मेरी भी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी. सो दैट्स द आइडिया. So if you want to raise the bar, average bar of average Indian student, I think good performance is good. Open book में बता चुका हूँ, on demand भी मैं आपको बता चुका हूँ. और कोरोना में जो challenges आए थे, हमारे पास इंटरनेट कैफेज तक हो गए माल मसाला देखने के लिए, पर जब जरूरत पड़ती है पढ़ाई लिखाई के या एग्जाम के लिए, तब हम रोना रोते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, IT नहीं है, bandwidth नहीं है. I think some of the institutions, rather all institutions, should have an open examination or academic cafe, whatever you call. Any student of anywhere in the Indian district registered with some ID can come and use the resources, so those can be beneficial for examinations. Okay. A lot of people used to cry at that time, maybe genuinely also, but
I know a lot of wrongly also, means intentionally also. Okay, I come to what was the last this thing. That's where I have made the contribution significant. So I would possibly say these were the core points. There can be more points also. Any subject combination, आपको example दे चुका हूँ. Merging of regular and online, all those ये भी हो चुका हूँ. Lifelong learning enabler भी बता चुका हूँ. Studying ending national international भी बता चुका हूँ. Government अभी allow कर रही है, कहती है आपको convert degrees credits into degrees and diplomas. तो जैसे रुपए आपकी करेंसी है और आप उससे कोई भी माल खरीद सकते हैं, फोन ये जो भी, ऐसे कैसे क्रेडिट आपकी करेंसी रहेगी और आप उसको डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट और नहीं तो रुपए की फॉर्म में ही रख सकते हैं क्रेडिट. वो अभी लेकिन हो नहीं रहा है. तो अभी हम सीधे ही डिग्री दे रहे हैं, पैसा मतलब जेब में नहीं जाता है कि भाई पैसे की बजाय धान दे दिया आपको, तो पैसे की बजाय डिग्री दे दी या क्रेडिट की बजाय डिग्री दे दी, वही हो रहा है. तो वो चेंजेस अभी नहीं हो रहे हैं. और ये लिबरल एजुकेशन में आपको समझाता हूँ. बट अब इसके नीचे वाले बॉक्सेस देखिए जो मैंने अभी डाले हैं. नोशन ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ब्रोकन, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी बिकम्स द फोर्थ. Notion of mode of education is broken, by this flexible education becomes at the fore. Notion of time of education is broken, you can go fast and slow. UGC ने अभी fast को allow नहीं करा, slow को allow कर दिया है, पर हमने fast नहीं करा. Multiple entry, multiple exit anyway, other things which are there. So lifelong learning enabler है. Notion of physical campus is broken. I can be in 5 campuses simultaneously. मेरे credit IILM में transfer हो सकते हैं, मुझे डिग्री IILM की मिल सकती है. आप कानून बनाएंगे, मैं उसको फॉलो करूँगा. Convert credits into degrees diploma. Notion of educational currency is broken. It's no more degree diploma. It's going to be the credits only. आपको पैसे भी credits के ही लेने हैं, टाइम भी credits का ही रोटेट करना और ultimately credits ही देने हैं, आपको ये करना है. And Bachelor of Liberal Education is something which I told you कि मैंने म्यूजिक पढ़ा, मैंने मैनेजमेंट पढ़ा और मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी. हर एक चीज़ मैंने 25 से 30% ले ली और 10% मेरे लैंग्वेज, मैथ्स या जो भी फिजिकल वो हो गए, मेरे 100% क्रेडिट पूरे हो गए. अब मैं जिस डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा वो क्या कहा, भाई साहब संजय साहब को ये डिग्री तो नहीं दी जा सकती, उन्होंने तो हमारे सारे कोर्सेज कह रहे हैं, उनको इंजीनियरिंग की कैसे दें या उनको मैनेजमेंट की कैसे दें या उनको म्यूजिक की, कोई भी एग्री नहीं करेगा, HOD डीन नहीं करेगा. उस केस में मेरा ये राइट होना चाहिए कि मैंने क्रेडिट्स पूरे कर लिए हैं, मुझे डिग्री मिलनी चाहिए. अगर आप स्पेशलाइज डिग्री नहीं दे रहे तो मुझे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन दे दीजिए. कहने वाले कहते हैं साहब इसका मार्केट में क्या होगा. मार्केट से मतलब नहीं है, मैंने वो पढ़ा जो मेरे को पढ़ना था. अब मैं जस्टिफाई करूँगा मेरे पोटेंशियल एस्पायर्स को कि मैंने ये सीखा और ये आपके काम का है, आप मुझसे जो चाहें पूछिए. एंड दैट्स हाउ इट इज. अभी क्या हो रही है, रोट लर्निंग हो रही, जबरदस्ती उसको डाला जा रहा है, उसका कोई पर्पस नहीं है. अब क्या होगा कि बच्चा को डिसाइड करेगा. सो दिस इज वेयर आई प्रॉब्ली give a small break, give me 50 more minutes later. Research और AI बड़ा important है. टेक्नोलॉजी में थोड़ी थोड़ी चीज बताऊंगा आपको, but I hope you understood. This is a committee for UGC where I work from 0 to last 100, you can say, on this, and this is where I feel very happy and satisfied with my contribution. And government has not understood this scheme at all. Babus are implementing it. They have only become a record keeping agency for that rather than making it student certificate. So with that, we can have a bio break, sir, because मेरे को coffee आई तो indication आ गया. For you only, we should continue. I am very happy, sir, with. So coffee and water. Thank you so much, sir. Now, if you want a break, you can take. Otherwise, I can continue. I am So friends, 45 academic leaders from 5 campuses are present here. We are left with 1 hour time to have question and answer. And whatever you have heard, believe me that I have devoted more than 60 months since 2020 July onwards. I have been trying to read all the books and all the articles published on higher education reforms. I have seen hundreds of YouTube interviews and lectures. I tell you that thousands of committees have been appointed to look into the detailing of making reforms possible. So it's a very big subject, and the whole ocean of future of higher education and role of academic leaders has been presented into 60 minutes, non-stop. So
So I have ordered coffee and water so that they can drink. That's fine. Now we will start the question answer session. There are certain rules. We have to take at least 20 questions, around 20 questions within the next 60 question and answer both, next 60 minutes. So there will be limited time available for each question, 60 seconds. You can take asking a question. No comments, only questions are invited. For comments, there will be time available during the lunch. Okay? You can ask and discuss anything. So, I will invite academic leaders first sitting in this rectangle, and in the second phase, we will invite from that side because several senior people are sitting. So, it will rotate like this. So, now time is yours. What sir has said, ask me about anything in this domain, not that I present it is what should be done. No, that's not the case. You can ask me anything which you feel is connected. So please tell your name and your campus. Okay? And ask question in 60 seconds, and I will request sir to take 2-3 minutes to reply. Briefly. Sir, my name is Nihar. I'm from the Greater Noida campus. I want to hear your Here, thoughts. kindly be a little loud so that 45 people will listen. My name is Nihar. I'm from the Greater Noida campus. Sir, I want to know your thoughts on these new models of education that are emerging in the country. We are hearing of Masters Union, Scalar, MESA, Altera, Polaris School of Technology. There are different models that are emerging which are affiliated to a university but are operating as a very different model. Sir, what are your thoughts on that, and is that the future? So I'm not necessarily aware of all those models because certainly for the last 2.5 years I'm not running education institutions. But whatever model, if there are takers for that, if there are people vying for those models, and I know in management education there are many models, for example, alright, I am a strong advocate for all of them. The reason being, it should fit the bill of a student's requirement rather than anything else. So if I create a model and it's not functioning as a model, automatically I get a feedback that this model is not good. So yes, to some extent there will be market forces, but to a large extent, innovation is required in education. Education, in my opinion, was least innovative in terms of delivery and functioning, and in my opinion, innovation was used the least amount of technology also. Can you name a product which came into life of ours because of education? There are so many things in life which came because of medical and defense reasons, but there are hardly anything from the education reasons. So these newness, new models, new approaches will possibly make education once again thriving and more acceptable. Next. That's my Sir, I'm Rahul Mishra. I'm from Lodhi campus. My question is this uncritical use of AI by students while doing group projects or learning maybe and sometimes superficial. So how to address that issue? Okay, I wish I'd gone through my full presentation. The answer would have been there. आप ये बताइए 100 साल पहले आपकी बॉडी फिजिकल पावर के लिए फिट थी या होनी चाहिए थी? हम सारा काम हाथ से करते थे, आना जाना लंबी दूरी करते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, सामान उठाते थे, पर आज की तारीख में हमने सब बंद कर दिया. We stopped that because machines आ गई, motors आ गई, systems, hydraulics आ गए, technology आ गई basically. तो आज की तारीख में आपको कोई कहे कि यहाँ से IIC अभी जाना तो आप बोलेंगे गाड़ी है या नहीं, या 10 मंजिल 5 मंजिल चढ़ना तो लिफ्ट है या नहीं, वो सब उसी का आंसर है. तो ये हुई आपकी फिजिकल पावर की सब. 100 साल बाद क्या हुआ? हर चीज़ 100 साल के बाद रिपीट हो रही है. जैसा प्लेग के साथ हुआ था, कोरोना के साथ हुआ था, कुछ ऐसा ब्रॉडली ऐसा कुछ होता है. तो मैं मान रहा हूँ कि कोई बड़ी चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसे ही रिपीट हो रही है. ये मेरा कयास है. तो 100 साल बाद, 100 साल पहले आपकी फिजिकल पावर ऑगमेंट हुई थी, 100 साल बाद आपकी मेंटल पावर ऑगमेंट हो रही. अब यहाँ पे हैवी लोडिंग की जरूरत नहीं है, हर चीज़ उठाने की जरूरत नहीं, हर चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं, बटन दबाते ही मिलेगी. तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप AI यूज़ करते हैं या करने देते हैं तो रॉन्ग नहीं. Why should I remember every damn thing which is coming across to me in my life? If I can have a better version, better explanation, and
further scope for probing more. I may not know. अब मैं अभी keywords दे दे के गूगल में कुछ छापता था, सीखता था, समझता था, पर अगर AI मुझे कह देगी सच्चे साहब आप ये सीखना चाह रहे थे, तो अगर आपको ये सीखना तो कुछ थोड़ा ये भी सीख लीजिए. That is the power of AI. So AI is a substitution which is enabling your mental power, this is physical power we think. सिर्फ एक ही वर्ड ऑफ कॉशन है आप सबके लिए और मेरे लिए भी, कि जब फिजिकल पावर सब्स्टिट्यूट हुई तो हमारी बॉडीज थोड़ी सी डीके होने लगी या जो भी है उसमें नेगेटिविटी आने लगी, तो हमने जिम चालू कर दिया. जिम फैशन हो गया आज की तारीख में, सबको जाना पड़ रहा है. यंग लोग तो ज़्यादा जाते हैं जैसे भी है, क्योंकि फिजिकल पावर उनको करनी है. और अगर अब हमने मेंटल पावर भी उसी तरीके से बंद कर दी तो हमें मेंटल जिम में जाना पड़ेगा. और मेंटल जिम कैसे होगा मुझे नहीं पता है. मेंटल असाइलम तो नहीं होगा. मैं नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि excess of anything will be bad, excess of AI will be bad, excess of lack of physical exercise will be bad. So AI को use तो करना ही है. I'll be a strong advocate for technology. AI for me is a technology. पर mental gym नहीं जाना पड़े तो शायद ज़्यादा है. हाँ सर. Sir, I'm Brigadier Gill. I'm from the Greater Noida campus. We registered there. Recently joined from armed forces. ये तो गन चला सकते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी अलग है. मेरा सर hearing your thoughts about having everything open without much of regulations, what I can understand, that free exams whenever you wish to have and things, thought process in that line. But we also in our campuses legislate or require 75% attendance. Now, just thinking about it, the next generation which is coming, sir, इनके virtual friends ज़्यादा हैं, real friends हैं. आप उनको, अगर हम उनको भी motivate कर रहे हैं कि ठीक है, you don't come to campus, there is no collaborative learning also, which is again a very important facet of a university. You're doing away with it. Your comment, sir, because it is going to lead us to a more isolated, individualistic world. छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, उसका वो 500 बच्चों वाला कि वहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग थी. वहाँ पे एक टीचर सारे सवाल के जवाब नहीं दे सकता है, तो जैसे ही मैं सवाल फ्लोट करता हूँ 10-20 बच्चे उसका जवाब दे देते हैं. एंड इट मेक्स माई लाइफ, माई कनेक्शंस विद देम, बिकॉज दे आर कनेक्टेड. किसी का जवाब अब मुझे पसंद आया तो मैंने पूछ लिया वापस, और तो हमारा कनेक्शन बन गया. और मुझे कई वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स आंसर्स मिल सकते हैं. सो सोशल मीडिया हेल्प्स कोलैबोरेटिव लर्निंग. ये बात अलग है कि हर टेक्नोलॉजी की नेगेटिव फ्लिप साइड है, सोशल मीडिया की अपनी नेगेटिव साइड है कि वहाँ पे कई दूसरी चीज़ें होती हैं. 75% अटेंडेंस करके भी हमने क्या पा लिया है, क्या तोड़ लिया ये बताइए. और वही सुप्रीम कोर्ट, वही कोर्ट अभी लॉ के केस में आप जानते हैं कि उसने खुद नहीं उसी को वायलेट करा है. सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? I make you sit in this room without even learning an iota of it. It's better that you go and sleep. So, by the way, I must claim that in my life, right from the beginning, I was a little innovative and I said I use my autonomy. And incidentally, in 1984 itself, when I was in a government, I was a self-drawing and disbursing officer. I would sign my salary bill and claim it. No one can challenge it. Challenge नहीं तो बड़ी-बड़ी authorities के पास जाता और पास होता है. तो उस टाइम से मैं बता रहा हूँ मेरी क्लास में कभी अटेंडेंस का लफड़ा हुआ ही नहीं. जो लड़का 2-3 क्लास मिस कर जाता है, मैं उसका नाम क्लास में अनाउंस कर देता कि इसका कोई दोस्त हो तो वो उसको बता दे कि इसकी अटेंडेंस शॉर्ट होने वाली है, और उसको बोल दे कि मुझे आके मिल ले. वो बच्चा मुझे आके मिलता, बच्चा या बच्ची. ये कोई रूल नहीं था, ये कोई किसी चला नहीं सकता था, पर मैंने मेरी क्लास में चलाया. वो बच्चा आता था तो मैं उसको बताता था बेटा तुमने ये टॉपिक 3 टॉपिक जो मेरे उन 3 क्लासेस के होते थे नहीं हुए हैं, तो इस पे मैं तुम्हें असाइनमेंट देता हूँ. और सारा असाइनमेंट मेरा होता था, हैंड रिटन होता था. उसमें कंप्यूटर कम भी था. चार्ट बनाएगा, लेबोरेटरी में काम करेगा, कुछ नोट्स लिखेगा, कुछ वेरियस अदर थिंग्स. और रूल एक ही था, 3 घंटे की क्लास मिस करी तो 6 घंटे का काम होगा, 2 घंटे की मिस करी तो 4 घंटे का काम होगा, और सारा फिजिकल होगा. उसका मतलब ये हुआ कि अब स्टूडेंट को समझ में आने लगे कि यार इसकी क्लास में बैठ जाओ, नहीं तो पता पड़ा है कि 1 घंटा बचाने के चक्कर में 2 घंटे जाएंगे. So the point is, you have to have your innovative methods. तो मैंने उस बच्चे को वो चीज़ें पढ़वाई जो उसने मिस करी, बट 75% से कुछ नहीं होने वाला. ठीक है भाई, फोर्स आप अपने घर में अपने बच्चे को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, 150 को एक क्लास में कैसे करेंगे आप बताएं, है ना. सो दैट्स माय आंसर. बी ओपन, बी अ मैग्नेट टू देम, कि वो क्लास में आपके जाने से पहले जाए कि सर की क्लास है, वहाँ तो मुझे टाइम से जाके पढ़ना. दैट इज एन आंसर फॉर यू. So because of the paucity of time, it is not necessary that everybody should ask question.
then it will take 2-3 hours. Sir, I am ready to extend it if they are ready. In this front row, only 3 persons. And only 3. And lastly, in this row, because heavyweights are sitting here, 5 people. So 3, 5, 8. Then we'll go to the second. So 3 persons are there. आप लोग सिर्फ नोट्स करके आप और अंदर आमने सामने चलिए नहीं मिलेगा आपको फास्ट बी फास्ट सर हमने देखा कि हमने फास्ट एजुकेशन में किया लेकिन स्लोली हम स्लो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अभी भी रख रहे हैं कि किसी भी एज में कोई भी डिग्री कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली जो भी हम टीचर सिलेक्शन कर रहे हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं क्रेडिट्स हमें एग्जाम्स के बेस पे देते हैं टू क्लियर दोज एग्जाम्स। सर माय क्वेश्चन इज कि हम उसको एक टाइम फ्रेम में बाउंड क्यों करते हैं? इफ आई एम एलिजिबल फॉर एग्जाम्स स्टडिंग फ्रॉम रिसर्च पेपर स्टडिंग फ्रॉम टेकिंग माय एजुकेशन इंटरनेशनली व्हाई डोंट आई जस्ट अपीयर फॉर एग्जाम टेक द क्रेडिट्स? देखिए जो आप कह रही है वही चीज कही गई है, बट ये भी नहीं हो सकता ना कि जो टाइम फ्रेम 4 साल का है वो सभी 2 साल का है। तो इसलिए कुछ नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है। 4 साल का 3 या 3.5 साल में हो सकता है। विदेशों में भी होता है कि मैं फास्ट लर्नर हूँ और मैं एक एवरेज इंस्टीट्यूशन में चला गया किसी भी वजह से, अब मुझे वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पाती। अब मैं क्लास में बैठ के खाली बोर हो रहा हूँ या टीचर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फास्ट वाले के लिए फास्ट ट्रैक जरूरी है। मैं एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज हूँ कि मेरे को 6, 7, 8 सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, टफ सब्जेक्ट भी होता है उसमें एक आध, और मैं फेल हो जाता हूँ एंड आई एम नाउ आइडेंटिफाइड एज अ लैगार्ड और अ फेलियर फॉर लाइफ। सो आई कैन से नहीं मैं तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा, 4 या 5। तो ये स्कीम्स बना दी गई है, पर इम्प्लीमेंटेशन इंडिया का एक सबसे बड़ा चैलेंज। देखिए इंडिया से बड़ा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप में से कौन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं? कोई है? काफ़ी लोग हैं। तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हूँ। वहाँ पे हम इनपुट देते हैं और आउटपुट निकलता है। एक लाउड स्पीकर वाला सिस्टम देख लीजिए, एक माइक्रोफोन में आप ज़्यादा तेज बोल दीजिए, पास में रख के वो एकदम ब्लास्ट हो जाता है, इको आती है, टू करता है, जो भी करता है। जैसे इनपुट बढ़ता है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो जाता है और उसको हैंडल नहीं कर पाता और आउटपुट डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये समझिए अगर आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से समझते हैं। इंडिया में हर स्कीम के लिए इनपुट पहले से ही इतना बड़ा है कि स्कीम चालू होने के पहले ही वो स्कीम डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसका ट्रांसफर फंक्शन गड़बड़ा जाता है। जैसे ही ये पॉलिसी आई, कोई रिजर्वेशन का, कोई नॉर्थ ईस्ट का, कोई JNK का, कोई फाइनेंस का, कोई टाइम का, कोई लैंग्वेज के, सारे वेरिएंट्स आ गए इसके अंदर। वो पॉलिसी चल ही नहीं पाती। 6 साल हो गए, 5.5 साल हो गए, NEP को कितनी आगे बढ़ी। कहने को तो पेपर में सब कहते हैं हमने NEP इम्प्लीमेंट कर दी, कल भी कह रहे थे खूब सारी यूनिवर्सिटीज़ वाले लोग कि हमने कर दी, पर अंदर जाके तो दिल में बहुत दर्द है उनसे। आगे चलते दो लोग फ्रंट रो से 2 क्वेश्चंस। Sir, I'm Dr. Fawad from Lucknow campus. I have a question, sir. In the next 5 years, what would be the most critical structural change we can implement to move from a teaching-heavy setup to a globally competitive setup? I think 3 things: flexibility to the learners or teachers or every stakeholder. That is number 1. Number 2, extensive use of technology, which will make the delivery repeatable, reliable, reproducible, scalable, which will be required. And the third thing will be, जो अभी बात हुई थी, heavy loading के लिए AI will have to be an integral part of your life in teaching learning. If you adopt to these 3 things, probably you will be at the center of what is happening, not necessarily at the peak. For the peak, you will have to innovate something more. हो सकता है 5 साल आप मुझे बाद बुलाएं वापस, तो मैं बता सकूं कि वो और नई चीज क्या आने वाली है, पर आज सिर्फ ये 3 ही पॉइंट। डॉक्टर रवि जी, ये अभी वहाँ तक आएगा, be ready. Sir, Ravi from Gurugram campus. Yes. Sir, Yeah. I know. Sir, we have been talking about this shift in mode method. The challenge comes at the model, where you're talking about converting credits into degrees of credit as a currency. Sir, commercial interest of institutions, private institutions who are there, technically as non-profit, but they are for profit, lot of investments are going in. So that is a huge impediment. Second, regulatory flexibility. Now, whatever frameworks that are coming up, it still doesn't give
theoretically it talks about it, but it still doesn't give you that flexibility where duration-based degree model, or you can learn at your pace and then at your place and get your credits, earn your credits. And market acceptance, on the other side also, the students and parent community when we go and talk. So all three are challenges essentially for the ABC things, sir. Throw some light. Okay, my answer will little crude, Professor Jain sir, for this. Brief only नहीं, but थोड़ा सा डराना भी पड़ेगा इसके लिए, इसलिए क्रूड इसलिए बोला कि देखिए आप जितनी भी बाहर की एजेंसी से डरेंगे तो वो आपको डराती रहेंगी, आपको कंट्रोल करेंगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यूजीसी से डरेंगे, यूजीसी कुछ कहेगी तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मार्केट वाला कहेगा प्लेसमेंट नहीं दूंगा, तो आप अपनी यूनिक चीज़ बनाइए और मार्केट को बोलिए ये मेरी यूनिक चीज़ है, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। तब मार्केट को पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं आपको कह चुका हूँ ऑलरेडी कि ऑटोनॉमी इज बिल्ट इन टू द हिल्ट इन मी, बेसिकली मैंने बताया आप आर्टिकल। एंड मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे के कह सकता हूँ उसके लिए, ऑटोनॉमी कैन नॉट बी गिवन, ऑटोनॉमी हैज़ टू बी टेकन। प्लीज थिंक अबाउट दिस फिलोसॉफिकली कि अगर कोई मुझे आके कहता है कि संचित साहब ये ऑटोनॉमी मैंने आपको दे दी, वाह ऑटोनॉमी यूज़ कर लो, जब वो मुझे दे रहा है और मैं उस पर डिपेंड कर रहा हूँ, जब मैं किसी पर डिपेंड करता हूँ मैं ऑटोनॉमस हो ही नहीं सकता। तो यू हैव टू सीज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ चेंज। यू हैव टू टेल द मार्केट दैट हियर आई एम। आईएसडी ने क्या करा आपके लिए, वो गई। आई एम श्योर सम ऑफ यू आर एनविंग आईएसडी मॉडल। आई एम नॉट सेइंग दे आर द बेस्ट और नॉट, बट दे हैव चेंज्ड द थिंग्स दे हैव डन। आज नहीं, आज से 20 साल पहले बिट्स पिलानी, एंड आई स्टिल एडमायर देम, नॉट दैट उनमें गट्स थे कि जब AICT was at the helm of things, अभी तो थोड़ा सा subdued है मामला, at helm of affairs for every damn thing which was happening in the professional education, for their MS program, जो distance वाला मोड, इंडस्ट्री वाले मोड में कई लोगों ने MS करी होगी, उसमें वो लिखते थे या लिखा होगा कहीं ना कहीं, we have neither applied for AICT approval nor we are seeking any such approval. Now it's up to you whether you want to seek my master's program or not. So basically you have to define certain standard norms. तो जो ABC के benefits हैं, आप सबसे पहले बनिए कि मैं credit एडमिशन करूँगा, framework है, कोई उसको नेगेट नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता। So basically things will happen once you become the change maker, not the follower. Thank you, sir. ज्ञान जी, मनीष जी, सर एक क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, मुझे उसका आंसर नहीं आता था। मैं आप एक क्वेश्चन कभी किसी ने मुझसे पूछा, मुझे आंसर नहीं आता था, मैंने आपसे पूछा। वो तो मुश्किल है। वो ही इज ए ज्वेलर, मेरा दोस्त है, वो कहता है मुझे बहुत खूबसूरत ज्वेलरी बनानी आती है और टॉप क्लास ज्वेलरी बनाता हूँ, तो और 12th पास है, तो व्हाई योर यूनिवर्सिटी cannot give me a degree based upon my skill to manufacture jewelry? तो इसके दो छोटे छोटे जवाब दे सकता हूँ। वो बहुत सक्सेसफुल है शायद, जैसा आप बता रहे हो उस हिसाब से। तो मैं भी मेरे बारे में कहता हूँ, जब मैं इंजीनियर बना था, I was not even 21, एंड बनने के बाद 1 महीने तक तो मस्ती करी, एंड देन आई थॉट अब क्या करना है, तो मन में आया एंटरप्रेन्योर बनूंगा। मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया लाइफ का, बट टू मूव इन एंटरप्रेन्योरशिप आई डिजाइन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस और व्हाटएवर in those times in 1982 for electronics, did trial production, did Department of Electronics, Government of India approval वगैरह, जरूरत होती थी उस टाइम, रेगुलेटरी बहुत ज़्यादा था, but ultimately I didn't succeed because I didn't have money. तो उस टाइम मैंने सीखा कि अगर मैं 9th क्लास में 3 बार फेल हो जाता तो मैं बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, मैं चपरासी भी नहीं बन पाता उस समय में। तो मैं किसी मारवाड़ी या बिजनेसमैन के पास जाके ट्रेनिंग लेता और फिर बाद में मेरी दुकान खोल देता, तो मैं एंटरप्रेन्योर बन जाता। सो विच इज़ द राइट अप्रोच ऑल्सो। सो वन कैन ग्रो इन लाइफ विदाउट एजुकेशन ऑल्सो। हमारे मारवाड़ी में मारवाड़ी हूँ तो बोल सकता हूँ कि पढ़ियोड़ा हूँ, बढ़ियोड़ा ज़्यादा बढ़िया, मीन्स जो लाइफ से सीखते हैं रादर देन जस्ट बीइंग फॉर्मली एजुकेटेड, सो दैट कैन बी पार्ट ऑफ द स्टोरी। रही बात कि आप डिग्री दे सकते हैं या नहीं दे सकते, डिग्री से उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, डेकोरेशन ही, बिजनेस तो ज्वेलरी का ही करेगा ना। तो बेसिकली इंडिया में वो चैलेंजेस बहुत हैं कि आपने तो जेन्युइनली कर दिया, एक डिग्री देके IILM ने कर दिया कि उस ज्वेलर को दे दी, वो एक पहुंच है, उसने हजारों करोड़ का बिजनेस कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, उसने
ज्वेलरी मेकिंग का कर दिया तो उसने सारी टेक्नोलॉजी भी सीख ली, कास्टिंग भी सीख ली, मतलब सारी चीज़ें उसने सीख ली, तो आप देख सकते हो कि वो तो कई PhD से ज़्यादा है। पर एक दूसरी इंस्टीट्यूशन जो आपके बगल में बैठी है वो बिना किसी पढ़े लिखे को या कोई पॉलिटिशियन को या किसी अनडिजर्विंग को देता है, तो इसलिए रेगुलेशन बन जाता है। तो यू हैव टू ट्रेड विथ कॉशन while doing so, but no one stops. This, I was wondering कि student को डिग्री की क्यों जरूरत पड़ेगी? मैंने कह दिया ना, जरूरत तो नहीं है, मैंने तो कह दिया, पर आप देना चाहते हो तो आपका रिकॉर्ड। जरूरत क्या होता है? जरूरत भी सोसाइटी है। When you Sir, go to get admission To for save time, let me give you a critical answer. बिस्मिल्लाह खान को जानते हैं? कौन थे? कौन सी डिग्री मिली थी उनको? इंडिया की हाईएस्ट डिग्री गवर्नमेंट से मिली हुई एक तरीके से, पता है आपको? वो भी मिला हुआ है, पर नेशनल एकेडमिक की बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर थे वो टिल लाइफ टिल द टाइम ही सर्वाइव्ड। कहाँ तक पढ़े थे? So yes, we can do it, but it has to be done in a genuine case. हम क्या है कि अब फैशन बन गया है कि हम ऑनरिस कॉजा 4-4, 6-6 लोगों को देते हैं। ये एक, और अब सोच लीजिए कि 1300 यूनिवर्सिटी हो गई है, तो साल में 5-10 हज़ार लोग तो वैसे ही डिग्री पा जाते हैं, जबकि कुछ हो नहीं हो। तो जब ये होता है तो फिर कहीं ना कहीं कानून आते हैं, अंगुलियाँ उठती हैं, ठीक है? तो अभी हमारे पास में आधा घंटे का टाइम है। सर एक क्वेश्चन मेरा, एक रुक जाइए एक मेरा, रुक जाओ, एक मिनट सुन तो मेरा गाली जी। तो अभी हमने क्वेश्चंस जो लिए इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के प्रोफेसरों और वाइस चांसलर से लिए, अब हम तिवारी जी जो इंजीनियरिंग के ही इंचार्ज हैं वहाँ पर IILM यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में, which is very essential for an engineer. So तिवारी जी प्लीज अच्छा जरा खड़े हो जाइए, हम देख नहीं पा रहे हैं आपको। तो मेरा करंट क्वेश्चन आपका करंट डेफिनेशन से है, इट इज अबाउट द पब्लिकेशन इनइक्वालिटीज। So what is happening these days that we are writing and we are then paying for the publication. So all the researchers have twofold burden to write and to publish. And inequality because most of the journals are shifting to the APC model, and in APC model we have to pay in euros and dollars. So it is very tough for Indian professor or the researchers to pay in dollars and in euros. वैसे तो What is your opinion on this? स्टूडेंट की पार्लेंस में कहूँ कि आप मेरा एग्जाम ले रहे हैं और मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो कह सकता हूँ, but in any case I like to answer that. That's a misconception most of us have. Publishers keep your things right from the inception. आपने चाहे गार्बेज कलेक्ट करके उसको पेपर के फॉर्म में करा है, चाहे उसकी एडिटिंग है, चाहे उसकी लैंग्वेज है, चाहे उसका रिव्यू है, मल्टीपल रिव्यूज है, फॉर्मेटिंग है, वेरियस थिंग्स, and then printing, circulating and keeping it for hundreds of years and giving you all the required intelligence called citations and this and impact and all that. Someone has to pay for that. Option is yours. You don't go for OA. OA, for example, in Elsevier is around 40%. 60% are non-OA, जो conventional. या तो पढ़ने वाला पैसे देगा या छापने वाला देगा। Elsevier या क्लूवर या टेलर फ्रांसिस तो रिसर्च करती नहीं है, तो पेपर कहाँ से लाएगी? They only facilitate. Now one can say सर काम तो मैंने करा है, रिव्यूअर ने रिव्यू करा है, दोनों करवा लीजिए, आपने काम करा है, रिव्यूअर रिव्यू करके बोलेगा अच्छा, अब आप कहेंगे अब दुनिया को उसका पता लगे तो पता ही नहीं लगेगा। So there has to be who will distribute in 180 countries in effective form. And कल को उस पर उंगली उठती है कि आपने प्लेगरिज्म करा है, गलत करा है, कॉपीराइट वायलेशन करा है, who faces the music? पहला नाम आता है पब्लिशर, ठीक है? और उसको सब जगह लीगली रिप्रेजेंट करना है, उसको जो भी करना है, जैसे भी करना है। दुनिया भर के बोर्ड्स बनाने पड़ते हैं, जैसे स्कोपस के अंदर करीब 7000 पब्लिशर्स के रिकॉर्ड्स उसके अंदर लिए जाते हैं। That's a completely independent board of a people like you. Now who will work for that? So the point is, cost has to be borne by someone. You can create your own wish कि मुझे इस रूट से जाना है, इस रूट से जाना है। Publishers don't gain, and if they don't gain anything, they will not publish. They will be out of business. It's as simple as that. जो mediators का रोल है वो रहेगा ही। इसके अंदर ये mediator नहीं है, ये तो basically proper alignment है, matching. अभी कहते हैं higher education खत्म हो गई, तो पता पड़ा जो मैं बिजनेस मॉडल कह रहा था स्कूल एजुकेशन और ओपन वर्ल्ड, वो खत्म हो जाएगा। सेकंड थिंग फॉर योर आंसर इज, व्हिच इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू,
Every publisher has some special schemes for developing countries or underdeveloped countries or whatever. I know for Elsevier, so I cannot quote for others. हमारे करीब 350-400 जर्नल्स ऐसे हैं जहाँ पे 80% कंसेशन दिया जाता है compared to others. Now we cannot differentiate because हम कहते हैं यहाँ पे 0 हो जाए तो अमेरिकन वाला कहेगा हम ही बेवकूफ़ है क्या कि हम पैसे दें और यहाँ पे 0 पे हुआ. That cannot happen. So it's up to you, and then there are 7,000 publishers. Who says you go to Elsevier or anyone else? It's up to you where you want to go. You can possibly in the current world start your own open access journals. But by the way, most of the Indian publishers in the scientific research domain, मैं बाकी का नहीं कह रहा, have not come up to the mark. I have visited Raman Research Laboratory, which is probably the oldest and most significant. उनके जितने भी journals हैं, most of the libraries where I go, they are not even subscribed. Most of the people who are from the field, they have not read those journals. So the point is, it's a very difficult word, and that is the reason why it has to be dealt with or treated with a little bit of caution. Okay. So cost can be different thing, but cost-cutting measures can come. But every day there is a challenge. आज की तारीख में AI से इतने ज़्यादा चैलेंज हो गए, आपने एक प्लेगराइज हमें दिया, हम क्या चेक करेंगे, कैसे करेंगे? So there is a cost to this because you have to have set of experts, set of tools first of all, the moment it comes, and it can be garbage. No one can be said at the time of submission कि आप क्या दे रहे हो, सही दे रहे हो, गलत दे रहे हो. ये चाहिए. तो लॉ से हमारे डीन डॉक्टर बाली फ्रॉम गुरुग्राम में डॉक्टर बबीता सिंह ये अपने सवाल भी क्वेश्चन आप बताइए. दोनों क्वेश्चन एक साथ आपको रिप्लाई करते हैं. ठीक. What's your take on that? Law and the other fields. Does it help the overall idea with which we are reaching higher education? बच्चा जी. Sir, good afternoon, sir. I just have 2 points to make, and since Question. you are Please, question. associated, just want to ask one thing. When you speak of education as a whole, you give a formula for the entire education. There are certain disciplines which are to be treated differently. And can we have an approach, like for example law as we have? It is both a science as well as a humanities subject. And sometimes we really land in trouble when it comes to discussion generally on topics like engineering or computer science or science as such. So can we have the formulas discipline-wise? This is my question. Discipline-wise formulas, improvisation, I would use the word. And so secondly, very small thing I would like to bring before you. Here comes the question of the Indian knowledge system. When we speak of artificial intelligence, the Indian knowledge system is based on the entire cultural and civilizational richness that we have as people of this country. So somewhere I feel that at international level, this is getting diluted. The richness that we have and the knowledge base that we have. So what to do with that? These questions slightly less connection between all the things. I have to answer differently. आपके सवाल का जवाब मैं कल मेरी मीटिंग में दे चुका हूँ. Law today cannot be surviving without technology. 50 पेज का एक मुझे जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, एज अ लेमैन और मे बी एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मुझे उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है, इंटरप्रेट करना है, तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना ही. बाकी सारी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, AI को लगाऊंगा और वो मुझे निचोड़ निकाल के देगी एक पेज का, तभी मेरा काम होगा. तो लॉ विदाउट टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी विदाउट लॉ. मैं आपको बता देता हूँ 1993 में मैं कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम करता था जो आपके सब मोबाइल में है आज की तारीख में. उसके बिना आपका मोबाइल चल नहीं सकता. मतलब मोबाइल नहीं रहेगा, बाकी चीज़ हो जाएगा, मतलब उस पर कम्युनिकेशन नहीं होगा. उस टेक्नोलॉजी पे मैं काम करता था. उसके कम से कम 4 डिफरेंट मॉडल थे, अलग अलग कंपनी. GC मार्कोनी अलग कर रहा है, HP अलग कर रहा है, टेक्सास अलग कर रहा है, जो भी है. फाइनली जिसने लड़ाई जीती और जिसने उसका लॉ बनवा लिया, जिसने उसकी टर्मिनोलॉजी करवा ली और जिसने उसके पेटेंट करवा लिए, वो जीत गया, बाकी हार गए. टेक्नोलॉजी विदाउट लॉ कैन नॉट सर्वाइव एंड लॉ विदाउट टेक्नोलॉजी कैन नॉट सर्वाइव. सो दिस नोशन कि इनको हम बाहर रख दें, इनको अंदर रख दें, ये गड़बड़ ही करेगा लॉन्ग रन में. पर मेरा ये मानना है कि NEP ने भी या SE ने भी या BPSA ने भी इनडायरेक्टली ये नहीं कहा कि ये लाइफ है. दे आर सेइंग वो ग्रेजुअली होगा. सर आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं मैडम को बाद में. टू बिगिन विद ऐसा नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी अमलगमेटेड इन द होल फ्रेमवर्क. दैट्स माय आंसर. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. आपने मैडम एक तो बात करी IKS की, उसके पहले वाला आपने क्या पॉइंट बताया था? डिसिप्लिन वाइज इम्प्रोवाइजेशन. वो मैं आपको
फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, ऑटोनॉमी बहुत अच्छे। आपको क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, ये आपके बीच में। IILM को क्या करना है, वो आपके बीच में है। अगर UGC बीच में आती है तो वो आपकी वीकनेस है, UGC की नहीं। आपका बॉस तो आपको एम्पावर करने की कोशिश करेगा ही, ये तय है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि आई हैव हेडेड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली रूल्स applied equally everywhere, wherever I was. I have never faced music because of that. All that what I have done with a sound footing, with a proper open decision making, with a proper reasoning in the interest of the institution and students, and it has survived test of time. मैंने 3 टेंडर होने के बाद भी मेरे से पहले मेरे से बाद में जो भी है, जो बहुत ज़रूरी होता सरकार में, मैंने पुराने टेंडर के बेसिस पर डिसीजन लेके चीज़ें इंप्लीमेंट करवा दी है विदाउट वरिंग अबाउट कि वो टेंडर सही थे नहीं थे, क्योंकि वो मेरे इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट में था। यू शुड हैव दैट बोल्डनेस टू डिफाई कन्वेंशंस इफ इट इज रिक्वायर्ड टू बी, नॉट नेसेसरली कि आप हर बार यही करें। आप रोज ही ये कह रहे हैं कि सब गलत है तो आप गलत होंगे। तो ये है। अब जहाँ तक इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट। आपने प्राकृत की बात करी, सुनी होगी, उसके अंदर लिखा हुआ भी है भाषा, शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, मैं भी बहुत कम जानता हूँ। आपको जान करके आश्चर्य होगा, इंडिया में 2-4 ही ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो उसको प्रमोट करते हैं। मैं उसका एक में से उसका मैं चेयरमैन हूँ। नहीं, लाडू में नहीं, जयपुर में है। इट्स कॉल्ड प्राकृत भारती बाय द वे। जयपुर फुट उसी की एजेंसी है, उसी के प्रीमाइसेस में, अगर आप जयपुर फुट जानते हैं तो। द पॉइंट इज the world will not accept you कि उनको scientific proofs चाहिए। I'm a Jain by the way, and lot of our literature says about various things in terms of scientific things with your regular life or lifestyle or living or whatever। रात को खाना या पानी के कंजम्पशन या किसी चीज़ का बॉइलिंग का जो भी है, ये सारी नॉलेज है हमारे पास, पर किसी तरीके से प्रोपोगेट नहीं हुई। अब हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। सो वी शुड जॉइन हैंड्स, वी शुड ब्रिंग दोज थिंग्स एंड वी शुड से कि ये कैसे होती थी, क्यों होती थी, वाई दे वर फाउंडेड एंड ऑल दैट। अभी तो हम IKS के नाम पे टोकनिज्म कर रहे हैं। अभी किसने उसको सीरियसली करा? IKS का बहुत छोटा स्वरूप शायद जीवन विद्या या इस टाइप के जो कोर्सेज हैं वो भी हम ढंग से नहीं चला पा रहे हैं अभी। तो चैलेंज इज विद अस, नॉट विद द गवर्नमेंट, नॉट विद द एजेंसीज हु आर ट्राइंग टू डू इट। हमें जो अच्छा लगता है हम उसका ओरिएंटेशन दे के हम उसको कर सकते हैं। 2 questions from social science. So anybody from social science? Greater Noida? हाँ बोलिए, डॉक्टर श्रीवास्तव। So I'm looking after psychology program. My question is coming from, as you said, the teacher. Most of the teachers are not by choice. Now we see that. इंजीनियरिंग के लिए कहा था मैडम। नहीं। See, this is so we are also seeing that a lot of students are way more smarter than their teachers. Let me put it this way. They are more advanced. So what are the key areas that you think we should train our teachers if they have to prepare the younger ones for next 20 years in education? Of course, there can be variety of things. वो choice तो teachers के पास ही होनी चाहिए कि वो research orientation चाहते हैं, teaching orientation चाहते हैं, consulting orientation चाहते हैं, या societal work का orientation चाहते हैं. Various other things can be there that they can do. And they can contribute in a different way. They can be good administrators because we'll need good administrators who are open. नहीं तो institutions कैसे चलेंगे? I became an administrator at the age of 40 because my institution was needing that. But I had a great wish to do research at that time. उस पे तो लगा दिया barrier और घुसा दिया administration के अंदर, तो हम इधर आ गए। तो ये चीज़ें कभी circumstances से change हो जाती हैं। पर मेरा ये कहना है कि एक यंग टीचर को आप हर बार उसको FDP के लिए भेजिए। छुट्टी जो गर्मी की होती है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं ली, मैं आपको बता सकता हूँ। वो छुट्टी लेनी है, मुझे काम है, जाना है तो मैं ले लेता हूँ, नहीं तो मैं कॉलेज जाऊँगा, मैं कुछ सीखूँगा, नया करूँगा, लैब बनाऊँगा, फैसिलिटी डेवलप करूँगा, ऑडियो विजुअल वाली चीज़ें करूँगा, अपने प्रेजेंटेशन जो भी है ये सब करूँगा। और मैं सबको एडवोकेट करता हूँ कि ये करें। तो मान लीजिए आप शुरू में नए हैं, तो पहले साल की गर्मी की छुट्टी में आपने सब्जेक्ट स्ट्रेंथन करा, कोर्स, टीचिंग, लर्निंग जो भी है। नेक्स्ट ईयर या पहले साल में पेडागॉजी का कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, वो पेडागॉजी का एक एग्जाम्पल दिया कि हर क्लास के बाद फीडबैक लेना वो पेडागॉजी का पार्ट है। मैं लेता था फीडबैक शुरू से, पर मैं सेमेस्टर के बीच में और एंड में लेता था, और मैं उसमें से टॉप वाले और बॉटम वाले डिस्कार्ड करके मैं मेरी एनालिसिस करता था। कोई सिस्टम नहीं चाहता था, बट उससे मैंने सीखा कि आप रोज क्लास में ले सकते हैं। तो पेडागॉजी का सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं।
थर्ड ईयर में जाएंगे तो आप चाहें तो आप रिसर्च का ओरिएंटेशन कर सकते हैं कि अभी नया रिसर्च इस सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स है, क्या स्टाइल है, क्या टूल्स है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने इसका एक टूल या सिस्टम बनाया, मैंने एक एनालिटिकल सॉल्यूशन बनाया। 2 दिन मैंने मेहनत करी और मैंने उसका कोई रिजल्ट पाया। मैं बड़ा खुश था, मेरे को 2-1 रिजल्ट मिले जो काफ़ी मैचिंग थे। फिर भी उसमें वल्नरेबिलिटीज थी, मतलब इतना बढ़िया नहीं था। एंड आई वाज हैप्पी गोइंग गागा अबाउट माय रिजल्ट एंड माय वर्क टू माय टीम ऑडियंस जो थी, जो हमारे दूसरे रिसर्चर्स थे। और जब मैं वो सब कर रहा था, ये 1993-94 की बात होगी, तो एक बंदा मुझे आके बोलता, संदीप तुमको ये पता है कि इस चीज़ का एक टूल होता है और ये टूल अपने किसी दूसरे ग्रुप में अपने डिपार्टमेंट में किसी के पास है। तो उसने बताया, मैंने उससे कॉन्टेक्ट करा एंड ही वाज ऑफरिंग मी द टूल। जो काम मैंने 2 दिन में करा, मुझे 20 मिनट में 10 नए रिजल्ट मिल गए और 10 नए रिजल्ट मेरे रिजल्ट से बढ़िया थे। सो दैट इज हाउ यू गेट एक्सपोज टू समथिंग। तो आपको रिसर्च की भी ट्रेनिंग लेनी है। चौथे साल आप क्या करेंगे? ये 3 चीज़ें तो कोर होगी, टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च जो भी है। चौथे साल मेरा ये कहना है कि आपकी टीचिंग इंडस्ट्रियली रिलेवेंट होनी चाहिए। मैंने ये वर्ड कॉइन करा हुआ है, आज नहीं, मैं करीब 2009 से चला रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं उसके बारे में। FIIP, फैकल्टी इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम। करीब 10% फैकल्टी, up to 10%, not necessarily exactly 10%. We used to send our faculty for up to 15 days during summer to an industry of their choice, जहाँ उनका कनेक्ट है। पर एक इंडस्ट्री में 2 से ज़्यादा आदमी नहीं जाएंगे और आप रिपीट भी नहीं करेंगे बाद में जाना है तो। जाके आपको सिर्फ हैंडशेक करना है। हैंडशेक करेंगे, उसमें आप उस बंदे से, वहाँ के जो भी आपका कनेक्ट है, उससे सीखेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या सॉल्व करते हैं, क्या टूल्स टैकल्स हैं, क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, किस चीज़ को इम्प्रोवाइज या कॉस्ट कटिंग हो सकती है, कहाँ एफिशिएंसी बढ़ सकती है। एंड यू आर नॉट दे डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन कि वो आपको एंटरटेन करें या सिखाएं या कुछ नहीं। पर जब आप वापस लौट के आते हो तो आपका ओरिएंटेशन बदल जाता है। आप उनको बुला सकते हैं, क्योंकि आपने भी 15 दिन उनको दिए हैं, 10 दिन उनको दिए हैं, उसके लिए कॉस्ट इंस्टीट्यूशन देती है। दैट मीन्स आपका TA, ट्रैवल स्टे, लिविंग चार्जेस, ऑनरेडी जो भी कह सकते हैं, इन एडिशन टू योर सैलरी नहीं कट होती है उसमें। सो विद दैट यू लर्न अबाउट इंडस्ट्री। तो ऐसे आप 5 साल की साइकिल बना लीजिए और उन 4-5 साल में मैं एक्सप्लोर कर लूँगा कि मेरा फिटमेंट कहाँ है। एक लास्ट चीज़ सर, आप टाइम इसमें दें, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च एंड इनोवेशन में आना था। एक चीज़ जो मैं हमेशा पढ़ता आया हूँ, अभी से नहीं, करीब 15 साल मान लीजिए, शुरू से नहीं, जब मैं वाइस चांसलर बना तब से नहीं, सीड ग्रांट लेनी जरूरी है। ये अनरिटन रूल है। जो नया बंदा आएगा, हर टीचर को सर यही कहना चाहता हूँ कि रिसर्च तो सोशल साइंसेज में भी होना चाहिए, मैनेजमेंट में भी होना चाहिए, कॉमर्स में भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग और उन्हीं का नहीं हो सकता वहाँ ज़्यादा हो। उसका पर्पज एक ही है, नॉट दैट कि वो कुछ बहुत भागड़ चीज़ बना देगा या वो दुनिया बदल देगा, वो नहीं। अगर उसने सीड ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं करा तो मुझे पता लग रहा है कि उसका एटीट्यूड इज टू बी फायर। 6 महीने के अंदर अलाउ करते हैं और गाइडेंस देते हैं, उसको कोई एक्सपोज भी करवाते हैं। नहीं करा तो पता लग गया कि ये डिफाई करेगा। अब उसने अप्लाई तो कर दिया पर कट पेस्ट कर दिया, कहीं से लाके इंटरनेट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं से लाके कर दिया, और थोड़े टाइम में आपको वो एहसास हो जाएगा कि ये वैसा है। तो आपको पता लग गया कि ये कॉपी पेस्ट वाला बंदा है, कहीं ना कहीं आगे लटकाएगा आपको इंस्टीट्यूशन को। तो आपको उसकी वो बोलते हैं ना, दूध के पग पालने में दिखते हैं, तो वो दिखने लगेंगे ये सब दूध के पग पालने के अंदर कि वो कैसा निकलने वाला है बच्चा आगे जाके, तो आपको वो पता लगेगा। अब मान लो उसने ढंग का प्रोजेक्ट बना दिया, कॉपी भी नहीं करा, उसने नहीं करा, 3rd स्टेज पे आ गया और आपने उसको पैसे दे दिए, पर अब वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, टीम नहीं बन रही है, इक्विपमेंट नहीं खरीद पा रहा है, फैसिलिटी नहीं ले पा रहा है, तो आपको पता लग गया कि ये इंटरेस्ट तो है पर गो गेटर नहीं है, ये करवा नहीं सकता, इसमें वो एबिलिटी नहीं है कि कैन टेक द टीम अलोंग, टीम बिल्डिंग या जो भी है, कन्विंसिंग द सीनियर लीडर। मुझे अभी भी ध्यान है कि मेरे समय में एक वाइस चांसलर थे जिन्होंने मेरे एक कलीग का प्रोजेक्ट रोक दिया और वो मुझ पर बहुत बिलीव करते थे। तो वो कलीग एक दिन बड़ा हताश होकर आया, मेरे पास बोला, मैंने कहा तुम्हारी फाइल मुझे दे दो। तो उसके बाद जब मैं वाइस चांसलर की टेबल पे गया, 15 साल पहले की बात होगी, मैंने वो फाइल रखी। जब हमारा काम हो गया तो सर एक फाइल डिस्कस करनी है मुझसे। बोले क्या है? कि सर इसकी फाइल है। बोले इसमें क्या है? कि सर इसमें एक प्रोजेक्ट है जो आपने अप्रूव नहीं करा है। तो बोले क्या करना है, क्या है इसके अंदर? मैंने कहा सर
आप मुझ पे विश्वास करते हो और मैं मेरे से ज़्यादा इस पे विश्वास करता हूँ, यू प्लीज़ क्लियर द फाइल। और मैंने वो फाइल क्लियर कर दिया, बिना देखे उसने वाइस चांसलर ने फाइल क्लियर करी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज he found me and I found his answer, so he was a go-getter in that sense. तो आप या तो उसको प्रॉप अप करेंगे या सपोर्ट करेंगे ताकि वो आगे बढ़े। और चौथी कैटेगरी हो सकती है सीड ग्रांट के बाद जो 1-1.5 साल में खत्म हो जाता है, पूरा 1.5 साल में तो खत्म होना ही चाहिए। उसमें ये है कि उसने सब कुछ करके दिखा दिया, अब आपको पता है कि उसमें रिसर्च का पोटेंशियल है, अब आप उसको रिसर्च फैकल्टी की तरह प्रॉप अप कीजिए, उसको बड़े प्रोजेक्ट दिलवाइए, उसको कुछ और कीजिए, उसको टीम लीडर बनाइए। सो एट एवरी स्टेप यू आर फिल्टरिंग द पर्सन। तो खाली कहने से, देखने से या पूछने से नहीं होगा, आपको करवाने से होगा। इंडस्ट्री के लिए दम है या नहीं, करवाने से होगा। ठीक है, दिस इज माय आंसर। So 2 questions we would like to ask, one from HR, Miss Sweta Singh, and second Sweta Chauhan, and second regarding examination from Dr. Srinivas. Good afternoon, sir. Thank you for a beautiful session and it was quite informative. So, I think building over what Dr. Anupama has asked. You are from HR, no? I'm from HR, sir. Not HR teaching नहीं, she is the group Leading HR. the department, sir. So my question is, sir, you talked about 2 terms, mature learners and the gap in the academic leaders. I mean, at present, which we are facing. So, as we evolving and we changing the entire education ecosystem, that's what we just discussed. What are the good best practices which you think, or the strategies we can implement when it comes to hiring the leaders or the teachers and the faculty, and how we can develop them? Because building their capability and the talent management is very important aspect. How we can do that? What's your view? And what's happening across in other? तो मैं पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों को कि मैं तो इंजीनियरिंग डोमेन का हूँ, HR डोमेन का हूँ नहीं। इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स आई हैड टू सर्वाइव, सो मैंने कुछ सीखा, बट आई कैन वेरी इजीली से दैट वाज माय वीकेस्ट डोमेन अमंग्स्ट माय वर्किंग। आई कैन डू वेरियस अदर थिंग्स ऑफ लीगल और फाइनेंशियल थिंग्स, बट HR नहीं। बट आई वुड आल्सो से इंटरेस्टिंगली आई यूज्ड टू कॉल HR एज हाउस ऑफ रोमांस, and sometimes it can be a weakness very easily. All right, so you understand that, and by the way, this terminology is borrowed from Bombay. My wife comes from Bombay. आप लोगों ने नाम सुना होगा कि केसी कॉलेज हुआ करती थी, वहाँ पे HR होती थी, अलग अलग नाम थे। तो उस टाइम का ज़माना अलग था, तो they would call the colleges not by their real names. वो हंसराज होता, वो जो भी होता होगा मुझे नहीं पता, but उसको हाउस ऑफ रोमांस कहते थे, केसी को किसिंग सेंटर कहते थे, या जो भी कहते थे, समथिंग लाइक दैट। तो HR थोड़ा सा डिफिकल्ट डोमेन है, बट डिफरेंट डोमेन है। You have to tread with caution. If you have taken someone in, उसको 2-3 चांस देने चाहिए, काउंसलिंग देनी चाहिए। अगर आपने ले लिया है तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आपने उसको समरली रिजेक्ट कर दिया है जस्ट बिकॉज on a given occasion he has not performed, or you have banged them in their head for just one mistake, that will not be good. You will have to do the hand holding. तो मैं जब भी मेरे किसी लीडर के साथ जुड़ा हूँ, मैं लीडर खुद बहुत जल्दी बन के अलग बात है, पर जब भी जुड़ा हूँ, I put one condition that Sandeep Sanchetti can be your team player provided you accept my condition. जैसे बताओ क्या चाहते हो, क्या सुन जो भी है। मैं कहता हूँ आप 10 काम देंगे, 7 में अच्छे करूँगा, बिकॉज आई डू एन अबाव एवरेज एफर्ट, और मैं कोशिश करता हूँ, तो 7 अच्छे हो जाएंगे, 2 एवरेज होंगे और 1 फेल होगा, बिकॉज आई एम नॉट सुपर ह्यूमन एंड आई कैन नॉट कंट्रोल एवरी कंडीशन, तो 1 फेल होगा। और अगर वो फेल होता है तो आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी 9 के बारे में बात करनी है तो कर लेना। द लीडर्स हैव अ टेंडेंसी कि जैसे ही आपने गलत काम करा, आपके पीछे पड़ जाएंगे, तुमने तो बिगाड़ दिया, जब देखोगे तुमने तो बिगाड़ दिया, तुमने ये करा नहीं। आई थिंक दैट एटीट्यूड शुड गो अवे थ्रू यू इन ऑल। हैव टॉलरेंस, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जब आप ले रहे हैं तो ये तो जब आ गया है सिस्टम के अंदर, तो आप ये करते रहें, हैंड होल्डिंग करें एंड गिव पेशेंट हियरिंग। जैसे मैं ओपन हाउस बोलता हूँ आपको, मैंने बोला मैंने करीब 15 साल अपनी लाइफ में ओपन हाउस कर रहे हैं, और 2-2 हज़ार फैकल्टी मेंबर के साथ। तो जब मैं शुरू में जब इतनी बड़े सेटअप में बोलता था कि स्टूडेंट्स के साथ करेंगे सर, 3000-4000 बच्चे बैठेंगे, कोई भी कुछ बोल देगा तो बोल देगा, सुन लेंगे, अगर होगा हम भी बोल ही सकते हैं। उसमें क्या था, रिकॉर्ड हो रहा है कि कौन जेन्युइनली नहीं बोल रहा। एंड दे वर वंडरफुल एक्सरसाइज।
इट इज अ टू वे। मैं भी सबको बता, मेडिकल वाले को इंजीनियरिंग का नहीं पता, इंजीनियरिंग वाले को सोशल साइंस का नहीं पता, और सबको पता लग रहा है कि नहीं सबको बराबर ही ट्रीट कर रहे हैं, जबकि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। तो ओपन हाउस कीजिए, तो उससे भी कई चीज़ें एचआर की थोड़ी सी इंप्रूव होती है। एचआर में ट्रांसपेरेंसी बनाइए, सैलरी स्ट्रक्चर्स वगैरह का बनाइए, तो भी एचआर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है। हमें ज़्यादा दुख ये होता है कि ये तो मेरे बराबर की डेजिग्नेशन का है, पर सैलरी उसको ज़्यादा मिल रही, मुझे नहीं मिल रही, ये लफड़ा एचआर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जब आप रिक्रूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आज की तारीख में आई वुड नॉट बी द वन टू डू इट विदाउट लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम वेयर समवन हैज सर्व्ड और डन समथिंग स्टडीज। ये मैंडेट है। अब मैं रिश्तेदार का लिया है, पड़ोसी का लिया है, एक नेता का लिया है दिखाने के लिए, तो वो मेरे को नहीं चलता है। तो वो तो आप शायद करते भी होंगे, पर मेरे लिए सबसे मस्ट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, generally limited to one A4 size paper, and once again generally limited to one condition, it has to be handwritten। जो मैंने बताया ना, मैं असाइनमेंट देता था handwritten वाले, वही वाला। और as a vice chancellor in the chair, obviously मेरे पास बोर्ड होगा, in most cases my boards used to be IIT and IISc professors, so I didn't have to do the technology or the subject part generally speaking, except for electronics। My part will be मैं उसका SOP पढ़ूंगा, inconsistency, language, framing, logical order, repetition, copying। एक बार पढ़ोगे आप ढंग से पता लग जाएगा। उसकी हैंडराइटिंग सही नहीं आपको पता लग जाएगा, उसकी स्पेलिंग सही नहीं आपको पता लग जाएगा कि बंदा किस ऑर्डर का है, क्लेम क्या करता है। और एसओपी को पढ़ोगे और एसओपी से 2 सवाल पूछ लो तो कई बार पकड़ में आता है कि कट एंड पेस्ट ही था, नेटवर्क से या गूगल से उठाया हुआ एसओपी था। सो यू आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट, what you want to do. You cannot do everything, but you have to have some niche practices so that you can select from garbage to a right element। जब मैं सरकार में था तो मेरे एक के अगेंस्ट 100 एप्लीकेशन आते थे। So NIT सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, एक के अगेंस्ट 100 एप्लीकेशन। So how do you do it? So you have to see certain such things। I hope I have answered you, but as I said, still some romance exists कि अरे यार इसने ये कहा है, उसने ये कहा है, तो वो रिकमेंडेशन में भी आता है कि सर ये तो मेरे साथ काम करा हुआ अच्छा है। तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस है, पर फिर भी ये है कि आप उसको वापस कह सकते हैं। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक IIT के डायरेक्टर, जब मैं मणिपाल एस्टेब्लिश कर रहा था एज अ फाउंडर वाइस चांसलर, किसी ने बंदे को मुझे रिकमेंड करा और उसने मेरे साथ 6-8 महीने काम करा। ही वाज सुपर्ब इन टेक्नोलॉजी एंड द सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का था, इसलिए मैं आपको बता ही सकता हूँ, नाम नहीं लूँगा किस IIT का और कौन से डायरेक्टर का, ठीक है। बट 6-8 महीने बाद मुझे निकालना पड़ा उसको, क्योंकि ही वाज बॉसिंग अराउंड विद एवरी अदर फैकल्टी मेंबर कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ। एंड ऑब्वियसली व्हेन आई टुक हिम आई न्यू दैट ही हैड सम इश्यूज, बट आई थॉट आई कैन हैंडल हिम, आई कैन गाइड हिम, आई कैन मेक हिज लाइफ। मुझे उसको निकालना पड़ा, ये भी निकाले हुए भी 8 साल हो गए, पर फिर भी आज की तारीख में वो मेरे पूरे टच में, ही सीक्स माई गाइडेंस। मैंने उसको निकाला था। You understand what I'm saying? So that is how you have to deal with your HR. So Dr. Srinivas, very good question. So my question is, already you told that is the different type of a degree we have to write our. So Different type of degree you may go right in future, right? The student how they may be interested, based on that we may award the degree. Yeah. Under that, still we are already we have the same situation. And if you see, for example, I will tell you, right, computer science and engineering is there, BTech. Under that, data science is there, data visualization is there, IoT is there, cyber security is there. So mainstream, if you see computer science, under that specialization, multiple things are there. Same thing, it will be for the law department, management, everywhere it is there. Right? Everybody getting the same type of a certificate, but only the name, it will be different. No much difference in the curriculum, no much maybe experience, right, how they are experienced in the courses and all. If this student, maybe they will go for an higher studies, maybe for the only within the India or outside India, how much problem or any problem is there, or there is no problem for getting an higher studies? If it is outside India, certainly they test you in a different way. So there can be problem. They don't understand certain nomenclatures, they don't understand certain specializations. For example, for computer science and electronics, electrical engineering degrees are a pretty common thing in the Western world.
एंड सर्टनली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड कंप्यूटर साइंस और आईटी के बाकी बच्चे नहीं हैं जो भी आप कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट और फलाना और टिकड़ा और एआई, ये सब नहीं है। और कल भी यही बात हो रही थी हमारी कि एआई का क्या मतलब है। एआई द बेस हैज टू बी द कंप्यूटर साइंस टिपिकली। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट वी आवरसेल्व्स हैव क्रिएटेड। हम लोगों ने प्रेशर डाला है एआईसीटी पे, या एआईसीटी ने जो भी कहा है कि हम एक्सपांड नहीं करेंगे आपकी एक डिग्री इससे ज़्यादा, तो आपने एक नया वर्ड ज्वाइन कर दिया और कर दिया। अल्टीमेटली जब लेट 90s में आईटी आया तो हम सब पे प्रेशर था। आई वाज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज फॉर एंटायर ऑफ दीस थिंग्स इन राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड वी हैड प्रेशर कि साहब आंध्रा ने बना दिया, वो बना दिया, तो राजस्थान का भी आईटी चाहिए। तो मैं एक टीम को लेके बैठा, जो भी कमेटी बनाई, तो हमने सिर खुजलाया कि भाई क्या बना है आईटी के अंदर। तो हमने सिर्फ 4 पेपर अलग करे, एक आईटी के लॉज बनाया, एक आईटी का इंट्रोडक्शन बनाया, 2 आईटी के कुछ और बनाए हमने कुछ डाल के, और थोड़ा सा जम्बलिंग कर दी, ये आगे कर दिया, ये पीछे कर दिया, और वो आईटी का सिलेबस बन गया। तो ये खिचड़ी हमारे लिए फोर्स्ड एक्शन थी, बट none of us could stand tall to such courses unfortunately. Very few are there. तो मैंने बिट्स पिलानी का एग्जांपल दिया। We are neither AICTE approved nor applied for. I think is a big thing for me. And ISB is another example which I said. We are not bothered about any affiliation or any approval, etc. If our degree is valuable, come to us, pay and take it. So you have to have that approach for that. Western world will assess it in their own way. They do a deep research. They don't recruit a faculty without doing a thorough. मेरा अभी जिस जॉब में मैंने ज्वाइन करा है, उन्होंने कम से कम 4 महीने मेरे करेक्टर या मेरी बैकग्राउंड या मेरी क्वालिफिकेशंस को चेक करने के लिए, और मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए हो गया कि वो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। अब मैंने डिग्री पीएचडी की करी और मैं यूके से आ गया, तो उन्होंने पूछा आपने यूके कब छोड़ा, तो जिस दिन मैंने डिग्री का वायवा दे दिया आ गया। तो डिग्री तो मुझे कन्वोकेशन में मिली, और वो मैच ही नहीं कर रही। वो कह रहे हैं आपके पासपोर्ट में तो एंट्री ये है और डिग्री के आप ये लिख रहे हैं। So it was a hell of a job. They go to such a scale of verification. Not that anything was wrong, but what I'm saying is there was a contention between the dates of my PhD degree. क्योंकि मैं तो करते ही तो यहाँ आ गया अपनी नौकरी में, तो डिग्री तो जब कन्वोकेशन करा जब मिली। So we have to see that we don't make system too complex. खाने की टेबल पे जब आपको खाने की थाली मिलती है, अगर 50 कटोरी लगा दे, खाना अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, आप टच ही नहीं कर पाएंगे आदि को, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन रहेगा कि जो दूसरा डिश बता रहा हो तो आपने टेस्ट ही नहीं करेंगे। So there has to be a limit to what we do. So I think ultimately to some extent IITs have resisted that. They have not gone blindly for some of these things called this thing कि हम AI की भी ब्रांच चालू कर दें, वो कर दें, वो भी प्रेशर में है, हो सकता है कि कुछ नहीं करा हो, बट थोड़ा सा कंसाइजनेस चाहिए कि एट अंडर ग्रेजुएट लेवल बेस लेवल के होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल गुड स्पेशलाइजेशन एंड पीएचडी लेवल सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और एट प्रोफेसर लेवल मजाक में बता देता हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं तो जब मैं 1984 में लेक्चरर बना, असिस्टेंट प्रोफेसर डेजिग्नेशन था, तो मेरे को एक कमरा मिला किसी के साथ शेयर करने का कुछ टाइम बाद, मतलब ज्वाइन करने, उस टाइम फैसिलिटीज़ नहीं होती ना, अपनी जूती रगड़ते थे जो भी था। तो गया तो कमरे में पीछे मेरी सीट के पीछे एक लिखा हुआ था, शायद किसी ने पढ़ा भी, मुझे भी पूरा याद नहीं। स्पेशलाइजेशन के रेफरेंस से बता रहा हूँ कि देयर वाज अ मैन कॉल्ड प्रोफेसर whose knowledge grew lesser and lesser, और उसके बाद 2-3 राइटिंग लाइनें और थी, एंड फाइनली उसमें नीचे लिखा हुआ था टुडे ही इज अ कॉलेज प्रोफेसर। तो ये स्पेशलाइजेशन का हाल है, और आप समझ लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये मेरी जर्नी के ऑलमोस्ट बिगनिंग का ये स्टेटमेंट है, और उस टाइम प्रिंट करना मुश्किल होता था और ये चीज़ें समझना चिपकाना भी मुश्किल होता, पर किसी वजह से थी मेरे को। चलिए, तो अब लास्ट में सिर्फ हमारे पास में 5 लोग हैं जिनके सवाल पूछ नहीं पाए हैं। सरताज मेरी तरफ देख रही है, और इधर श्रुति जी क्वेश्चन पूछना चाहती थी, वो सवाल पूछ ले, आंसर जो है यहाँ नहीं देना मिलेगा, आंसर आपको लंच करते हुए हम में से कोई भी और संदीप जी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सवाल पूछिए। Sir, I'm Sartaj and I'm working here with Lodhi board. Sir, the faculty here. Just wanted to ask about mind mapping. You've given in one of your presentations, and how can we use this as part of pedagogy in management, especially for marketing, because I'm a marketing faculty. So please contact him during the lunch. Sure. जयपुर से कोई फैकल्टी आई है? Anybody from Jaipur? नहीं। So Shruti. So I'm Dr.
था कि अभी recently Azim Premji University they have released a report on the state of working India, which says that Working India? हाँ जी. So which say that 40% of the Indian graduates under the age of 25 are still unemployed. So there is still, the report kind of highlighted the gap between academic delivery and the expectations of the industry. And एक तरफ हम बात करें कि India is going to be an educational hub and a lot of foreign universities are coming to India and establishing the base. So what is your thought on this, which we will discuss over lunch? You have to wait for getting the answer. Sir, I have a question. If you want to, those of you want to enjoy your lunch, you can catch me before that. Lunch का taste खराब हो जाएगा. Aishwarya, you were asking question. Aishwarya from Gurugram. Get an order. Yes, sir, actually because we are going to have a common foundational year and we are also going to give a plethora of opportunities to our, sir, I am Ashwini, I am from Humanities and Social Sciences. Repeat your question again, please. Yes, sir, so we are genuinely trying to launch a multidisciplinary program for our undergraduate students with a common foundational first year, and then they select their majors and we give them a lot of baskets. This is an institution that is genuinely wanting to do this. What do you think is the biggest operational obstacle or a challenge which can break these departmental silos of programs? Like, you know, we... Sure, we can discuss it. Not Okay. an issue. Last. I have done it myself, sir. Please. Sir, my name is Dr. Anas Tripathi and I teach Decision Science and AI in Gurugram branch. Sir, I have a question. You have mentioned about the evaluation process, like the open book exam or the on-demand exam as well. How we will be able to standardize it or scale it, looking at the diverse India in the nature, like there are different kind of diversion exists. How can we standardize and scale this? Simple answer है, आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, वो कैसे करा ये बता दो. तो डी स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हैं. एक ही पेड़ पे चढ़ने के लिए मछली और हाथी दोनों एक ही पेड़ पे चढ़ेंगे, जल्दी पास होंगे क्या? ये तो उदाहरण आप ही देते हैं, मैं नहीं देता. सो आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, वो भी गलती करा, कैसे करा, तो डी स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर. ठीक है. माइंड सेट. बाय द वे IITs have claimed, IIT कानपुर is going ahead, 4 दिन पहले की न्यूज़ है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि एग्जाम्स विल बी प्रोग्रेसिव और डिटेल्ड इन दिस थिंग. अगर मैंने एक लेवल अटेन कर लिया तो मुझे हायर लेवल का पूछा जाएगा और उसी बेस पे मेरी मार्किंग होगी. और कुछ आपके GRE GMAT उसी टाइप के टेस्ट होते हैं. पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए टीचर आपकी क्लास लग जाएगी उसके अंदर, अगर उसको करना है तो ध्यान रखिएगा. चलिए, स्टैंडर्ड थिंग बड़ा आसान है. If you have enjoyed 2 hours session, give a big hand to I request Dr. Ravi Jain and Dr. Bhuneet Sabharwal and Rahul Vasali to felicitate Dr. Sandeep Sanjay. Please. Sir, thank you so much. It was very, very fun-provoking, also provoking also, and helping us to, you know, kind of start. Rahul, please come here. यार फोटो ठीक आना चाहिए ना. On behalf of the entire team, sir, all our 5 campuses of IILM and the entire family of IILM. So all of you are invited to have lunch outside the room. Thank you. Just I forgot to a protocol, and that is we have to give a vote of thanks. And Dr. Vigyan is requested to give it. I have requested him when I forgot. I have a confession to make. You know, sir, while listening to you, one gentleman kept coming to my mind, Dr. Sudhakar Mishra. I'm sure you would have heard of him. Right, professor of eminence from the Newcastle University, the UK. And he spoke about hole in the wall. It was an experiment which he did. And what he spoke about a lot. It happened in Delhi.
pretty hub in Delhi, in a slum, correct, in a slum, and curiosity-driven exploration. I'm sure that is a kind of your approach wherever you go, wherever you work, and the fact that the Indian system needs to change a lot. And thank you so much. Probably we can spend days, listening to you and learn a lot of things as such. It was truly a wonderful session, sir. Thank you, sir, for getting Dr. Satyedi and my colleagues from IILM institutions, Dr. Nihar, Ravi, Vita ma'am, and all other deans and directors from different business schools, and my faculty colleagues from Lodhi. So thank you so much for. So we will have a group photograph. We'll have first, then we have lunch. And before you Is it close, okay? thank you from my side also for this opportunity, because these opportunities are the wonderful things for us to learn, assimilate something new which the world or institutions might be needing, and make new friends also. So I'll remain connected. Do write to me on social media or otherwise. My email is sandeepsancheti@gmail.com. Easy to possibly remember, and let's help each other. Thank you. I've sent you my personal LinkedIn. Yeah, sure. So please hurry up. Come at the gate. Thank you, sir. We'll have a picture.